खूबसूरत अंदाज में खेला। He's gone. Beautiful shot. और स्मैश कर दिया इसे। Round 7 of the Quaid Azam Trophy live from National Stadium, Karachi. मैं हूं अमर नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं सलमान भट्ट और तारिक सईद। तारिक, ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, सुबह की कंडीशंस पे आपकी क्या राय है? जी हाँ, सुबह की कंडीशंस मुख्तलिफ लगी हैं। आज खासी ओस गिरी हुई है पूरे कराची शहर में, और पहली बार हमें धुंध देखने में आई, क्योंकि कराची में इससे पहले मुझे नहीं कभी इत्तेफाक हुआ कि आपने धुंध देखी हो। तो अब जो आउटफील्ड है इससे परेशानी हो सकती है, पहले फील्डिंग करने वाली जो टीम है उसको जब गेंद अगर बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है, लेकिन इससे आपके गेंद को स्विंग कराने के भी इम्कान बढ़ जाते हैं। सलमान, सदर पंजाब ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फ़ैसला किया है। आप अभी दोनों टीमों पे नज़र डाल रहे थे, क्या टैक्टिक्स वाजे होते हैं दोनों की टीम सिलेक्शन से? देखिए, ऑब्वियसली दोनों टीम्स ने पहले बैटिंग करने का ही प्लान किया हुआ था। ऑल द मोर रीज़न क्योंकि सदर्न पंजाब जो है एक बड़ी बैलेंस्ड आउटफिट है। दो फास्ट बॉलर्स प्रॉपर हैं, दो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं जिन्होंने हंड्रेड्स भी किए हैं और विकेट्स भी ले रहे हैं, और जाहिद स्पिन में भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनका तो ईदर वे इट्स गुड फॉर देम, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव साइन कि दोनों टीम्स जो है ना वो पहले बैटिंग करना चाह रही थी। तो यही है कि उसमें अपनी बैटिंग पे आपको एतमाद होता है, एंड यू लुक टू गेट द अदर साइड आउट ऑन द फोर्थ डे। उस मुश्किल से बचते हैं आप। वेयर एज बलोचिस्तान का ये है कि उन्होंने दो स्पिनर्स को खिलाया है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर दो फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। अभी तक कोई टीम यहाँ पे सिर्फ दो फास्ट बॉलर के साथ नहीं गई। आई थिंक दे आर द फर्स्ट, और इसलिए शायद वो भी पहले बैटिंग करना चाह रहे ताकि दो स्पिनर्स लास्ट डे को एक्सप्लॉइट करें। अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट द टॉस, नाउ दे हैव टू कोप विद कि जी अब दो स्पिनर्स के साथ उन्हें डे 1 से जाना पड़ेगा। देखते हैं कि वो कैसे जाते हैं इस पर। लेकिन आई थिंक कि जो ड्यू है एज अ बैटिंग साइड यू वुड विश कि यहाँ पे 2-3 चौके लगें, बॉल गीला हो ताकि अंदर वाली मूवमेंट थोड़ी कम हो। तारिक, अभी हमने सदर्न पंजाब पे अगर हम रहें तो पहले 2 मैचेस में उनको बढ़तरी हासिल हुई, उसके बाद से या तो हार रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं। इनकी जो सीनियर प्लेयर्स जो बैनुल अक़वामी टूर के लिए गए हैं, उससे उनके जाने से इस टीम पे कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो शायद हम कह सकते हैं कि बैटिंग में किसी हद तक पड़ा था। शान मसूद चले गए थे, फिर हुसैन तलत, जो दोनों बहुत रन्स बना रहे थे, लेकिन इनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो अभी भी खासी मजबूत लग रही है हमें। सैफ बदर ने रन्स बनाए हैं, उनके अलावा सलमान अली आगा वो रन्स बना रहे हैं। कप्तान जो हैं उमर सिद्दीक, उन्होंने बिल्कुल मायूस नहीं किया। तो इनके बॉलिंग के मसाइल थे, इसलिए शायद ये 4 फास्ट बॉलर के साथ ये मैच खेल रहे हैं, क्योंकि जाहिद महमूद के अलावा अभी तक बॉलिंग में वो उतनी पेनिट्रेशन नज़र नहीं आई जो मोहम्मद अब्बास की मौजूदगी में थी। तो लेकिन ये टीम जो है अभी भी 2 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंच सकती है, तो इसलिए मुझे ये ज़्यादा बेहतर पोजीशन में लग रहे हैं। इस टीम का बैलेंस भी बेहतर है। सलमान, पिछले राउंड में तीनों मैचेस जो कराची में हुए, तीनों में हमें नतीजा दिखाई दिया। यहाँ के मैच में भी आपको नज़र आ रहा है कि मतलब 4 दिन के अंदर खेल चलता रहेगा या कुछ जल्दी ख़त्म हो गया मैच? देखिए, ये प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है कि जल्दी ख़त्म होता है। इफ़ इट ऑल गोज़ रॉन्ग लाइक इट डिड विद सिंध इन द लास्ट गेम कि जी 29 ओवर में टीम आउट हो जाए, तो फिर एक राइटिंग ऑन द वॉल आ जाती है कि जब तो आना ही आना रिज़ल्ट। बट इफ़ बोथ टीम्स प्ले डिसेंट क्रिकेट, तो लास्ट डे इंट्रीगिंग होना चाहिए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एनीबडीज़ गेम। वहाँ पर 4 डे का सही मज़ा आता है, वहाँ पे जीतने का। इधर यूर अ बैटिंग टीम और यूर अ बॉलिंग टीम। सो आई गेस के कंपटीशन थोड़ा स्टिफ होना चाहिए। लास्ट मैच बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया था वंस सिंध बैटिंग कोलैप्स्ड, और उसके बाद जो टैक्टिक्स थे उनके बॉलिंग में वो भी समझ नहीं आए। सो आई होप दिस वुड बी अ मच बेटर गेम। तारिक, बलूचिस्तान की टीम के मतलब इतने तजुर्बेकार खिलाड़ी भी नहीं हैं या थोड़े वेटरन खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए इस टूर्नामेंट के अंदर एम्स क्या होंगे? क्योंकि जाहिर है कि शायद वो जीत ना पाएँ, मगर अगले सीज़न के लिए, इस सीज़न के लिए वो क्या लर्निंग्स लेना चाहेंगे? देखिए, एक तो ये बलूचिस्तान वाइड टीम है जिसने इतने ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं सेकंड 11 से बुलाए हैं। 9 खिलाड़ी ये ला चुके हैं वहाँ से, और यासिर शाह के जाने के बाद इनकी जो बॉलिंग की काट है वो कदरे कम हुई है। और एक और मसला जो बलूचिस्तान के साथ नज़र आया, जब इमरान फ़रद
टीम से बाहर हो गए थे, और फिर बिस्मिल्लाह खान के जो नए इनके बैट्समैन थे उन्होंने ग्रासी पिचेस पर स्कोर नहीं किया। मिसाल के तौर पर हमने देखा कि अजीम घुमन, उन्होंने एक मैच में जब पिच पे इतना ज़्यादा ग्रास नहीं था तो दोनों इनिंग्स में 90 रन बनाए थे। उवैस ज़्यादा रन बनाते हुए आ रहे थे, लेकिन जब पिछला मैच वो खेले हैं स्टेट बैंक के मैदान पर जहाँ पे पिच पे घास थी, तो उनकी बैटिंग जो है वो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि वो मुतासिर हुई है। और ये पिच जो है इस पर भी घास है, यहाँ गेंद सीम करता है, तो इनकी बैटिंग के लिए एक इम्तहान तो रहेगा। लेकिन उन्होंने खासी हद तक सुख का सांस लिया होगा कि इमरान फरद फिट हो गए इस अहम मैच से पहले, और ये टीम अब तक उम्मीदों पर पूरा उतरी नहीं। जिस तरह का आगाज़ था पहला मैच जीतने के बाद से, वो उसके बाद शायद फैसल इकबाल, उनका भी टीम से बाहर रहना वो भी बेहतर नहीं रहा। लेकिन अब बिस्मिल्लाह खान हूँ, फैसल हूँ या इमरान हूँ, वो तीनों इनके खेमे में मौजूद हैं। सलमान, अभी आपने काफ़ी कायदे आज़म ट्रॉफ़ी खेली है, और जैसे जैसे टूर्नामेंट चलता रहता है, ऑब्वियसली सर्दियों में होता है तो मैचेस जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, कंडीशंस में फ़र्क आता है। आपकी नज़र में इस मैच और आने वाले मैचेस में कोई वाज़िफ़ तब्दीली आएगी कंडीशंस के तौर पे? देखिए बिल्कुल कंडीशंस मैटर करती हैं, लेकिन अब आप पंजाब में नहीं खेल रहे, वहाँ पर ये कंडीशन का इफेक्ट ऐसा होता है कि आपके मैचेस जल्दी ख़त्म होते हैं, धूप में वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, सर्दी में वो पिचेस ड्राई नहीं होते। कराची में ये इशू नहीं है, लकीली जहाँ पे लड़के खेल रहे हैं बड़ी अच्छी धूप मिलती है, पिच बैटिंग के लिए भी साजगार हो जाता है सेकंड और थर्ड डे पे। सो द इश्यूज़ आर नॉट द सेम। सो आई थिंक कि बड़ा बैलेंस्ड जो है ना एक मुकाबला होना चाहिए। पिचेस बड़े अच्छे बन रहे हैं, नेशनल स्टेडियम के ग्राउंड्समैन को बड़ा क्रेडिट जाता है कि रन्स भी हो रहे हैं, फास्ट बॉलर्स भी आउट कर रहे हैं, और ये ट्रॉफी में यूनिक चीज़ है कि आधी विकटें स्पिनर्स ने ली हैं और आधी विकटें फास्ट बॉलर ने ली हैं। सो दैट टेल्स यू द स्टोरी कि कितना बैलेंस्ड प्रिपेयर किया गया पिचेस को, और आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर क्रिकेट। अब बैट्समैनों को थोड़ा सा अपनी क्लास दिखानी चाहिए, जैसे हम बार बार बात करते हैं कि फ़र्स्ट डे जो है ना, इनिशियल आवर्स, वो आपको एज ओपनिंग बैट्समैन फर्स्ट 3 बैटर्स वो आपके निकलने चाहिए, इतना अच्छा आपको होना चाहिए टेक्निकली। तो सलमान ने अभी आपसे बात की ओपनिंग बैट्समैन के क्या चैलेंजेस होंगे। थोड़ी देर पहले अली यूनुस थे पिच पे, एंड लेट्स गो टू हिम विद द पिच रिपोर्ट। Yes, welcome to these gorgeous conditions here at National Stadium Karachi for the 7th round match between Southern and Balochistan team. The conditions are beautiful. It's a bit overcast conditions. There's been a lot of dew last overnight, and the surface, well, it looks a mixed surface in my opinion. If you look at here, there's a lot of green grass here. If I may mention here, this area. Here you go. This is a lot of green grass here, so this shows that there is something for the fast bowlers. And also, when I knock it at this, there is moisture in it also. So this first hour and so maybe till lunch, I'm looking this for the bowlers to dominate this game. So in my opinion, if you win the toss and you should be bowling first, just to get that early advantage for the bowlers. Sikandar Bakht was out there with the captains a little while ago doing the toss. Let's take a look at what happened. Hello and welcome to round 7 here at the National Stadium Karachi with the Quaid Azam Trophy. It's a bright sunny morning, a bit hazy here. All conditions might favour bowling. Let's see what happens at the toss. We've got Mr. Javed Malik, our match referee. We've got the two captains, Southern Punjab, Umar Siddiq and Imran Farad from Balochistan. Balochistan is the away team, so they have the right to choose if they want to bowl first without a toss. So are we having the toss? Yes, we are having the toss. Okay, so Umar will flip the coin. Tails is the call. It's it. So, Umar, you won the toss. सबसे पहले तो ये बताइए करेंगे क्या? सर बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग करेंगे। थोड़ा सा आगे आइए ताकि आपकी आवाज़ भी आ जाए। इस विकेट पे हमने देखा है, ऑफ कोर्स किसी भी ऐसे लॉन्गर वर्जन में पहली इनिंग्स में अच्छा स्कोर जो है वो मैच का शेप बनाता है। क्या टारगेट आपको लगता है इस विकेट को देखते हुए आपको एक मोमेंटम देगा? सर 300 और 350 के बिटवीन हमारा ये है कि हम ये वाले पॉइंट लें, उसके आगे जितना मैक्सिमम हो। एक अच्छी चीज़ है कि आपकी टीम टॉप ऑफ द टेबल चल रही है और थ्रू आउट पहला हाफ जो क़ायद आज़म ट्रॉफी का गुजरा है वो आपके लिए अच्छा रहा है। इस पोजीशन को देखते हुए ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइड में 11 में या उसी साइड के साथ जा रहे हैं? नहीं, 3 चेंजेस किए हमने। बिलावल भट्टी हमारे अनफिट हुए हैं, उनकी जगह इमरान रंधावा आए हैं और मोहम्मद इलियास को खिलाया, और एक हमारा बैट्समैन निशान अशरफ की जगह मोहम्मद उमैर खेल रहे हैं, उनका डेब्यू हुआ है। गुड लक टू यू। थैंक यू। इमरान, विकेट पे हमने अभी तक नेशनल स्टेडियम में देखा है कि रन्स बन रहे हैं, और इनफैक्ट सेकंड हाफ के बाद से जो है टूर्नामेंट के काफ़ी अच्छे स्कोर्स हो रहे हैं। पहले बैटिंग करना चाहते हैं आप भी? जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए टॉस किया था कि पहले बैटिंग करना चाह रहे थे, लेकिन दैट्स ओके। फ्रेश पिच होता है, चांसेस भी होते हैं बॉलर के पास अच्छा स्टार्ट देने के लिए। अगर अर्ली विकेट मिलती हैं तो हमारी अच्छी स्पिन बॉलिंग भी बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस बॉलिंग है, और फास्ट बॉलर भी एक्सपीरियंस अच्छे फॉर्म में है। सो ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑन फर्स्ट फ्यू आवर्स।
कितना डिफिकल्ट रहा है बलूचिस्तान की टीम के लिए? आपके रेगुलर कैप्टन यासिर जो हैं वो ट्रैवल कर गए, फिर आप इंजर्ड थे तो दूसरे कैप्टन आए। चेंज ऑफ कैप्टनसी में मोमेंटम में फ़र्क पड़ा है टीम में? नहीं, कोई इतना खास नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स यासिर जो थे वो उन्होंने हमें पता था कि जाना तो है, लेकिन प्लान में ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था सबको, बिस्मिल्लाह को, इसीलिए वाइस कैप्टन थ्रू आउट ही बनाया हुआ था कि साथ साथ ग्रूमिंग भी करते रहें, और एज सीनियर हम उन लोगों को साथ साथ ग्रूम भी कर रहे हैं कि कैप्टनसी आगे जाके भी करनी है फ्यूचर में। सो तैयारियाँ पूरी हैं सब, पहले से ही प्लान था कि ये सारा कुछ करना है। उमर का कहना है 300 होने चाहिए। आपने काफ़ी क्रिकेट यहाँ खेली है, कितने स्कोर पे अगर रोकें तो आपको लगता है कि मैच में रहेगी टीम? आई थिंक कोशिश करेंगे कि उन्हें अंडर 300 ही आउट करें, और वैसे भी इतना कोई थ्रेट नहीं है पिच में कोई नज़र आ रहा, तो 300 350 के अंदर हम भी कोशिश करेंगे पूरा दिन लगा के, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, जल्दी जल्दी में क्रिकेट नहीं खेली जाती है। कोशिश है पेशेंस के साथ बॉल करें, उनको कोशिश करेंगे कि लूज़र ज़्यादा ना दें, और एक लिमिटेड वे पे बॉलिंग करके जो है उनको अच्छी तरह से जो है टफ टाइम दें। चलिए, गुड लक टू यू इमरान। थैंक यू। So the news from down here. Southern Punjab have won the toss and they've decided to bat first. तो आपने सुना इमरान फरहत, और कह रहे थे कि अभी उनकी टीम उम्मीद कर रही है कि फ़्रेश पिच है, उनको तब भी चांसेस मिलेंगे बहुत जल्दी। सलमान और तारिक, आपसे मैं आपकी राय लूँगा। सलमान, फर्स्ट आवर में बलूचिस्तान के लिए क्या क्रूशल है? ऑब्वियसली वो 3 से 4 विकेट्स लेना चाहेंगे टू मेक द सेशन देयर्स, और ये अगर निगेट कर जाते हैं उसको तो फिर सेशन इनका होगा। तारिक, यही सवाल सदर्न पंजाब के लिए। जी हाँ, इनके जो ओपनर्स हैं, इमरान रफ़ीक पहली मरतबा ओपनिंग कर रहे हैं इस चैम्पियनशिप में, तो दोनों लेफ़्ट हैंडर्स हैं। उनकी यही कोशिश होगी कि सिर्फ 2 फास्ट बॉलर मुखालिफ टीम में है, तो पहला घंटा जो है उसको गुजारा जाए। उसके बाद जो स्पिनर हैं, ज़ाहिर है वो दोनों लेफ़्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, जल्लाद खान भी और उनके साथ काशिफ भट्टी भी, तो फिर इनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी दोनों लेफ़्ट हैंडर्स के लिए। तो मैच का आगाज़ अनकरीब है, खिलाड़ी और अंपायर्स बाउंड्री रोप के करीब हैं। वी आर गोना टेक यू अप टू द कमेंट्री बॉक्स टू स्टार्ट द टेस्ट प्ले। Hello and good morning and welcome to the National Stadium, round 7 of the Quaid Azam Trophy. The sunny morning, hazy in Karachi. It's December. Southern Punjab and Balochistan will take on each other in round 7, and this is going to be an interesting encounter in terms of the tournament shaping up and who will qualify for the finals. The top two will. These are the two sides here. Imran Farhat leading Balochistan, whereas Umar Siddiq continues to lead Southern Punjab in the absence of Shan Masood. After the team, there was a bit of imbalance in all the sides, but now they have got themselves that rhythm, that momentum that was required. You see Azim Goman being called in from second 11. They also have Awais Shah not playing today, also coming in from second 11. Both these batsmen riding on hundreds that they've scored. Looking at Southern Punjab, they seem more in a balance because they've got themselves maximum wins. They're topping the table. Good to see Amir Yamin back in action after he wasn't well. Salman Agha is also a good prospect for them later in the order in terms of batting. Zain Abbas is now getting into the rhythm of opening for their side. Saif Badr, a little more required. He's got a lot of talent. Bowling also getting strengthened. Taj Wali, Umaid Asif, Kashif Bhatti for Balochistan. Mohammad Ilyas back for Southern Punjab. Ziaul Haq with his left arms, well, medium paces. It's going to be interesting. Don't forget Zahid Mahmood, the leg spinner. A lot has been spoken about him. So they all are back. And so do we have Chishti Mujahid back in the commentary box. Good to have you. It's been the second half of the tournament, so it's looking good, all in shape, and great to have you back. Thank you very much. Assalamu alaikum and welcome back to the National Stadium Karachi, where Sikandar has just given you an update. And the news from the National Stadium is that Southern Punjab have won the toss and they have decided to bat. I'm told that both sides wanted to bat. As such, there was a toss was necessary. And it's going to be an interesting match, but Southern Punjab and Balochistan are at number 3 and 4 in the list so far, followed by Sindh and Central Punjab, who are bringing the tail, with Northern and the Khyber Pakhtunkhwa being first and second. So this is the second round. 10 matches for each team, and this is Taj Wali, left arm, medium fast, as it is said there. He's already got a field in slip, 3 slips.
Tajwali, big burly, he's been in this for a long time. That's a good look at the field. 3 slips, a gully, point, a cover on the offside. Square leg, just round the corner, a mid-on and a mid-wicket on the onside. Nice sunny morning, just a tinge of haze. Let's play, gentlemen, says the umpire, and here is Tajwali. Zain and Rafiq, the 2 batsmen. Ahsan Raza is the umpire at the bowler's end. Very senior umpire, in fact the senior most in 2020 matches, and this is his partner Asif Yaqub. He's been there for a long time as well. Tajwali from the pavilion end. And the 3rd umpire, Rashid Riaz, up and coming, very good prospect. Of course, there should be a few other officials. There is a 4th umpire, I'm told. I don't know how many they have these days, but anyway, those 2 out there are the necessity, and the 3rd umpire is very important. There is a bit of swing, just a bit of swing, a hint of swing, but not much. Tajwali isn't express pace. This is round 7, first day. Southern Punjab versus Balochistan. It's looking good, bowling in the good areas. The ball pitches and straightens up or just moves slightly away from the left-hander. That's why they got those 3 slips, or rather 2 slips and 2 gullies. This is weather for Karachi, 22. My phone says 20. I'd like to think it's a little colder than that. And it's hazy, you can see that. Nothing in the background beyond those floodlights. It's going to stay like this somewhere around afternoon. After 12 o'clock, it'll clear up. Strengthened the slip cordon a bit. He's got 3 slips and 2 gullies now. So he did move the ball just a bit outside Zain's off stump, but Zain of course left them alone, and then there's a point and a cover on the offside. That should be the end of the first over. A maiden, none for none, Southern Punjab. Or is it? Fraction more, fraction. Yeah, 1. Right arm over. Umaid Asif continuing, starting off rather from the far end. He's been around the circuit, featured a lot of times for various franchises in the PSL. Tall fast bowler, gets that
pace also going. He might not look express fast from up here, but he is quick when he wants to be. And he gets that extra bounce because he's really tall. So important to understand what's required out of you as a fast bowler on a wicket like this. National Stadium has really been a different strip this time around in the Quaid Azam Trophy. Sometimes you feel in a particular game there's offering nothing to the spinners, even on day 4. The fast bowlers have to fight it out. Have a look at this. Lots of grass cover left over. This is going to provide something for the fast bowlers in the first 2 hours. That's what we always talk about when you got the new ball. You can see it off with these conditions. You'll probably find yourself in for a good score. You can see a bit wayward right now. He's trying to get that ball to shape into the left-hander. Yes, Umaid Asif has been featuring, particularly on the domestic scene, in the shorter formats of the game. A lot of them have been in and out of contention of the international side, but the rest are sort of purely domestic players. Umaid Asif. Rafiq plays it out onto the onside quietly. It's going to be a quiet beginning. Both batsmen will have a good look at this pitch, which is it's got a tinge of green. I'm no reader of the pitches, but as experts say, it's got a bit of green on it. As the sun shines, maybe not that it'll turn brown very quickly. Zain Abbas not yet off the mark, and Umaid Asif also not yet off the mark, because nobody's been on or off the mark. It's all 0, 0, 0, 0, 0, 0. God, look at the scoreboard. Umaid Asif with a fairly longish run up. That should be the end of the second over, and it is none for none. That's the batting order of the Southern Punjab side. Zain Abbas, Rafiq, Saif, Mohammad Imran, Umair, and Siddiq, Salman, Yamin, good to see him back in the side, Ilyas, Zahid and Haq. And as we've been commenting throughout that the players do have numbers on their shirts, but no names as yet. And somebody told me the answer was that this is an ICC regulation, which is an absolute wrong answer. Because the ICC started this in England in test matches, and they have names and numbers. Taj Wali. Now I've worked myself around numbers. Even I have a number which I have to tell at the gate at the National Stadium. I'm 26, and they know me as 26. So I've made friends with jersey numbers over here. These are the same jersey numbers which they use in limited overs, by the way. Like, for example, Sarfaraz, when he was playing, he'll be 54, and so on and so forth. But I get your point, yes. It would be easier, would be easier for us. I mean, we don't have crowd, but yeah, I guess that was the point, to have the name and the number, so that if you got crowd out here in the longer version of the game, they know who they're looking at. Well, Sikandar, when someone gave me that explanation that in England, where it started, as you know, in the test matches, they started the numbers with the name on it. Someone said, no, you only have numbers, and this is an ICC rule. And I then had to sit and watch some of the highlights of the England test matches.
outside the off stump. That one moved a bit. And not only the England test matches, but also played by the other sides, including Pakistan. And I can assure you that there are numbers and names. Otherwise, it's pointless. We can't say that here is number 38 bowling to number 28 and there is number 26 commentating. Sitting next to him is number 0000. What is this world coming to? Anyway, I hope someone in the Pakistan cricket board takes notice of that now that they are free from the New Zealand problem. We have enough officials in the Pakistan cricket boards, very good ones, and I'm sure they have taken note of this. Yeah, speaking of New Zealand, yeah, it's been a tough wait for all the players and management. End of the over, none for none. So 3 maidens, Balochistan, Southern Punjab yet to get off the mark. Speaking of the New Zealand tour, yes, it takes a lot to be locked inside, and that is for their and others' safety. That's the points table here. Southern Punjab has been leading for a while, but then, as we know, 16 points for a win. So if Southern Punjab ends up with a draw and some other team wins the game, it's easy for them to just climb up the ladder. And similarly, with 4 games to go in the league stage, even Central Punjab can find themselves at the top. So they got their first win in the previous game here. Talking about this particular match, it's being played on the same pitch where Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa played Balochistan, I think. It's the same wicket. Okay, I've got a brain freeze at the moment. It was Khyber Pakhtunkhwa and another team. 1,344 runs were scored in the match at a rate of around almost 4 runs an over. Over 100 runs per session. And the opening day, it was Khyber Pakhtunkhwa who scored 371. That's the highest. But this particular pitch provided so many runs, and even the wickets were falling, but both the sides were in such a momentum that they just didn't stop going after the bowling, and 4 runs and over continuously through the day for 4 days was amazing to watch. Lesser number of overs were bowled and more runs were scored. I suppose they were stroking the ball so frequently that there wasn't time for all the overs to be bowled. Umaid Asif, this is the PSL final versus Lahore. Qalandars, 4 overs and 18 runs for a couple of wickets. Not bad. I told you he was a regular feature in these 2020 shorter formats and the ODIs. And this beginning does not speak well for the pitch. That you're saying that 300 plus runs were scored on one day on this very pitch. It was KP versus Northern, 1,344 runs scored. Now there was an interesting table, statistical review of each round of the Quaid Azam Trophy, which I was looking at yesterday. It was shared by our producer. What was amazing in that was, I was talking about round 5, 3,816 runs were scored across 3 matches which were being played simultaneously. And these runs were scored in around 105.4 overs. That's the average. Compared to something like in round 2, 2,742 runs in 881 overs. It's just amazing that particular round 5, for all 3 venues, was such high scoring games. Everyone was having in the excess of 400 runs in their first innings, which has not been the case up till now. Still, Southern Punjab yet to get up mark.
trying for a quick single. End of the over. 4 gone, none for none. Speaking of big scores, just the other day I was on social media and I saw Pakistan Cricket Board posted a video and I heard your voice in commentary. 23 years ago on the same ground, 1997, Ijaz Ahmed and Amir Sohail had a first wicket record partnership of 298 against West Indies here. That was a long time ago. You still sound as fresh as you were at that time. But this particular ground has had a lot of good stories for Pakistan. What would you like delivered for dinner? Because I can't take you out, so I'll have to send you something. You say all the nicest things. 23 years ago is only half of my commentating career, which I started on this ground, 1969, England versus Pakistan. Alan Knott, 96 not out. Oohs and ahs, but nothing positive. So yeah, the Pakistan test record of first wicket, 298 with a 2. Ijaz Ahmed and Amir Sohail. Saw a few video clips of that and they were all over West Indies. Lots of scores square of the wicket here on this ground. Anything short which would be expected from the West Indies bowlers at that time. They batted through the whole day. I watched the whole video. It was similar, very hazy morning. So it was yesterday, 23 years ago yesterday, December. So yeah, it's going to be the same weather. Yes, it is rather salubrious in Karachi during the latter half of December especially. This is like an English summer day. I thought I was going to say that those are the first runs of the bat, but the ball went straight to mid-on. Still the same field. There are 3 slips and 2 gullies, a point to cover, short leg and a mid-on. Are those the only 2 men on the onside? It's a good look at the field. Taj Wali on his way. What's likeable about Taj Wali here? First runs coming in. Just a push with a straighter bat, gets him a boundary, and that's how Southern Punjab start off with the last ball of the over. They're 4 for none after 5. Nothing fussy about that. Just leaning into it, and you get the reward. What I like about Taj Wali is that he's not trying anything different. He knows that the conditions will do the talking in the first hour and a half. So he's still just persistent around that middle off stump and getting that ball to shape away. And he's got those 3 slips and 2 gullies. So sooner or later, the batsman, if loses any concentration, will hand him his wicket. So it's a good contest going on. Whereas Umaid Asif is more about hitting the deck. He's also trying to give the ball a bit more air. They've understood how this cricket works over a period of time. I was talking to Waqas Maqsood, who got 9 wickets in the previous match here. I asked him how difficult or how easy was it for him to
get used to the Kookaburra ball here, which has been now introduced in a domestic circuit. And he said, yes, initially it was tough in the first few rounds because the ball gets, once it gets older, it doesn't do much for you compared to a Gray's ball, which is with a more protruding seam, and it doesn't really get old, doesn't lose its shine. But this ball, you've got to really work on it, and you can't use your saliva, so the reverse factor also has to be controlled with just your sweat or shining it on the trouser. It's an art. You've got one player in every side who just works on those things. This is the vacant area in the mid-on, and they want to come back for the third. That's good running. I would give credit to Zain for that, because he's the one who pushed him for the third. So yeah, these fast bowlers are learning the art how to give it more air initially. There you see slightly fuller length, just trying to give the ball a little more chance to move away. Waqas Maqsood has played very well in this tournament, in the Quaid Azam trophy. He's got a bag full of wickets. Waqas Maqsood, has he played for Pakistan? Because he did go, yes, he did go on tour. He went to the United Arab Emirates, one of those home matches which Pakistan used to play in the Emirates. But I think he was a 1 or 2 one-day match player. Waqas Maqsood didn't live up to the expectations. 8 for no loss. Umaid Asif. That's trying to yoke him. Well dug out by number 83, who is Rafiq. Pakistan Cricket Board has done well. You're just looking at the number of games that Pakistan has promised in terms of international and domestic. And not just Pakistan Cricket Board, the players, you and I, all of us, in these conditions. Pakistan is probably the only country that's playing this full domestic season. At the same time, they've had Zimbabwe here for 3 T20s and 3 ODIs. They're looking to host South Africa at the end of January for, I think, 2 tests and a couple of T20s under the over. 8 for none. And then they finished off the playoffs of the PSL. And all in all, 112 games in the first quarter of 2021. That's a lot of cricket. South Africa would be looking forward to that visit to Pakistan, particularly since they've just got a little bump in the program, with England abandoning the tour and packing their bags and taking wing for England after some COVID scare in the South African team. I feel sorry for South Africa there. Pakistan, of course, has fought it out in New Zealand. 55-member squad. Have lived in a biosecure bubble. I'd like to see a biosecure bubble. I think that's the expression. It's not a bubble. Please don't imagine they'll all put in a bubble or something. That is because you are protected, and so are the others. So Pakistan now would be relieved. That's
Good delivery, but kept a little low. And Zain trying to square cut that one. Wasn't high enough for him to do so. Skidded a bit. Some of the unfit players of the Quaid Azam trophy are now back in contention. Khurram Manzoor and Bismillah Khan. Good to have them back and bouncing. 11 players from the Quaid Azam trophy squads were pulled out and are at the moment in New Zealand. So the teams became a bit imbalanced, but they've got used to it, and I think now they are on level terms. 8 for no loss. Taj Wali to Zain. You speak of the biosecure bubble and how the world has changed their way of understanding things, the importance of what we usually take for granted. Well, it's just so different now. You can't just pick up your passport and go to the airport and say you want to travel. You've got to go through various tests and approvals and things. So you just tend to value things a little more. I don't know. Are you used to this the new normal, or you still find it a bit odd waking up every morning? No, for some time, since I crossed my 70th year, I thank God and make sure that I am up in the morning. So that's good enough for me. But I'm not used to this. I'm used to traveling, taking a passport and visa and just going and buying a ticket, of course, and booking a hotel and then relaxing there. I haven't traveled since March this year. We'll have to have another look at it. Did that carry? That's dropped. That's the line Taj Wali's been offering. Persistent outside the off stump. Have a look at that. Just a lazy approach. Gets that genuine edge. Does it carry or not? The thing is that we're just talking about how you understand. Oh yes, that was in the hands. That should have been taken. The bowler would surely not like that, because he has been very patient with that line, waiting for that edge. I was thinking for a moment that with Taj Wali's pace that might have not carried, but they did. Good wake-up call for you, sir. And then this, the bowler has to face that, driven through covers and a couple of runs. Now this was Umaid Asif, beg your pardon. It's by the reaction it did carry and went straight to hand. In fact, both hands. And it was in and out. And yes, he's still regretting it. Ayaz Tasavvur is the offending fielder. Although watching various clips and sort of in short bursts of the 2020s going all over the world at the moment, the leagues like the Sri Lankan League, and also there are a couple of other leagues like this, the standard of fielding has improved throughout the cricketing world. Particularly the outfield. There have been some fantastic catches which went in the air and the fielder first took it and then realized that he was going over the line, knocked it up, came back and then completed a clean catch. It happened about twice or three times
And Shoaib Malik was one of them. Brilliant catch. Yeah, I was thinking the same thing when we were talking about Umaid Asif and he's been around the circuit. These days, especially when he features more in the shorter version of the game, you've got to be an all-rounder, so to speak. You've got to be a bit of a batsman if you're a specialist bowler. Of course, your fielding matters a lot. Speaking of leagues, you've got the best of the world forming in 11. So you can't be the excess baggage around there. You've got to be the best. And it's very difficult to penetrate. Lots of words were being discussed when India was playing Australia and their T20s, that they're lacking a batsman who can bowl a bit. You've got to have skills in all three departments to make it to the 11 when you talk about the shortest format of the game, yes. This version, this format, yes, relying more on specialists. In fact, at one time, the fast bowlers were not supposed to be very good fielders, but that has changed. We have some very, very fine fielding by pace bowlers. Mitchell Stark is one of them, very good fielder, particularly in the outfield. And James Anderson, of course, slip specialist. Chris Broad, of course, is an all-rounder, a genuine all-rounder. 10 for no loss after 8. Yes, I beg your pardon. Chris Broad was the father. This is Stuart Broad. I beg your pardon. अपना 5वां ओवर शुरू किया है ताज वली ने। बहुत ज़्यादा शॉर्ट गेंद थी, इसे बड़ी खूबसूरती से खेल दिया। गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी। चौका लगाया जैन अब्बास ने, पूरी तरह इस बार बैकफुट पर आते हुए पॉइंट के फील्डर को बीट किया। फास्ट बॉलर को यहाँ पर लंबे स्पेल करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि उमैद आसिफ और ताज वली के अलावा कोई भी पेसर नहीं है बलूचिस्तान की इस प्लेइंग 11 में। उनने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को शामिल किया है। इसलिए कोशिश यही होगी इन 2 लेफ्ट हैंडर्स की, जैन और रफ़ीक की, कि इन दोनों बॉलर्स को सी ऑफ किया जाए और उसके बाद लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर आएँ तो उस सूरत हाल का फ़ायदा उठाएँ। कमेंट्री बॉक्स में महमूद हामिद आए हैं। सुबह बखैर महमूद, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। और पहला दिन आज ये कैच जो ड्रॉप हुआ था, बड़ा अच्छा लाइन के ऊपर बॉल किया था अब तक ताज वली ने, ऑफ स्टंप की लाइन को मुसलसल हिट करते हुए। 3 स्लिप, एक गली कैचिंग और एक शॉर्ट लेग। इस दफा थोड़ा सा बीच में आए थे बॉल का, थोड़ा सा ऑफ स्टंप की लाइन पे जब कर रहे हैं ताज वली, तो वहाँ से तुमको तो थोड़ा सा मूवमेंट मिल रही है। और फील्डर्स का बहुत अहम रोल है तारिक, कि बॉलर्स बड़ी मेहनत करते हैं और एकदम उनकी बॉल पे कैच छूट जाए। तो बहुत स्लिप के वालों को तो ऑल द टाइम कंसंट्रेट करना पड़ता है, अदरवाइज एकदम स्लिप लगती है और जो है कैच छूट जाए तो बड़ा मसला आ जाता है।
इसी के इंतज़ार में थे कि उनकी बॉडी की तरफ गेंद आए, से टर्न करके 2 रन हासिल किए जैन अब्बास ने। तो दोनों टीमों का जो कॉम्बिनेशन है वो खासा मुख्तलिफ है। ये ताज वली और उमैद आसिफ ये 2 सीम बॉलर्स हैं, जबकि 4 सीम बॉलर्स को खिलाने का फैसला किया यहाँ पर सदर्न पंजाब की टीम में। मोहम्मद इलियास, ज़ियाउल हक हैं, उनके अलावा मोहम्मद इमरान इनकी टीम में वापसी हुई है, मोहम्मद इमरान रंधावा की। आमिर यामीन ये भी ऑलराउंडर हैं। ज़्यादा मुतवाज़िन टीम नज़र आती है सदर्न पंजाब की, जिसमें एक लेग स्पिनर भी हैं जाहिद महमूद। इस बार फिर फील्ड को मात नहीं दे सके, कवर पोजीशन पर तैमूर थे, 16 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। ये दोनों टीमें आज की, इमरान फरहत सीनियर क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, जो कप्तान हैं बलूचिस्तान टीम के, उनके वाइस कप्तान बिस्मिल्लाह खान, विकेट कीपर काशिफ भट्टी, जलाद खान टॉम स्पिनर, ताज वली और उमैद आसिफ इनके जो मेन फास्ट बॉलर। स्टंप की लाइन पे करते हुए बॉल, और अब तक दोनों ओपनर्स की यही कोशिश है कि लंबा जाएं, क्योंकि पहले घंटे का खेल जो है वो हम अमूमन जो होता है वो मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए। फ्रेश पिच होती है, थोड़ा सा मॉइस्चर, आज तो वेदर भी थोड़ा सा हेजी है। आप जब हम सुबह ग्राउंड में देखा तो काफ़ी ओस थी, तो डेफिनेटली जितना भी इसको कवर करें, लेकिन एक उसका मॉइस्चर ज़रूर पिच के अंदर रह जाता है। तो यही टाइम होता है कि फास्ट बॉलर इसको एक्सप्लॉइट करें, और एज सून जितनी पहले घंटे के अंदर अगर 1-2 विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं। खूबसूरत शॉट, गेंद आगे गिरी और उसका पूरा फ़ायदा उठा लिया, दिलकश तरीके से खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट। इमरान रफ़ीक का शानदार चौका, उनका पहला। बहुत आगे पिच कर दिया था उमैद आसिफ ने बॉल, उसको बहुत अच्छा जो है जस्ट टाइम किया उन्होंने, और पॉइंट के फील्डर के बाएं जानिब से होता हुआ गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। इमरान रफ़ीक का पहला चौका। ये जो बाउंड्रीज लगी हैं अभी तक 3, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि बॉलर को कदरे मुश्किल हो सकती है। अभी गेंद को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं उमैद आसिफ, क्योंकि जिस तरह महमूद हामिद बता रहे थे कि ओस गिरी हुई है, इसी मैदान का जो ज़्यादा सरसब्ज हिस्सा है वो ज़्यादा वेट भी है। फिर गेंद जो है आप उतना ज़्यादा मूव नहीं करा सकते जब एक मतलब आउटफील्ड से ये वापस आती है बॉलर की हथेलियों में। ये एक 2 धारी तलवार है कि पिच पर अगर उस गिरने से बॉलर को फ़ायदा हो सकता है, तो आउटफील्ड में जब बैट्समैन गेंद को रवाना करता है तो उसको भी फ़ायदा हो सकता है। बहुत अच्छा मिडिल करते हुए इमरान रफ़ीक, ऑफ स्टंप की लाइन को कवर करते हुए अच्छी टेक्निक के साथ बैटिंग कर रहे हैं। ये फैसल इकबाल अब पूरी तरह फिट हो चुके हैं। ये कुछ अरसे के लिए टीम के साथ नहीं थे, हेड कोच हैं बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। बलूचिस्तान की टीम में खासी तब्दीलियां लग रही हैं। इमरान फरहत की वापसी हुई है टीम के कप्तान की, उनके अलावा तैमूर अली की वापसी हुई है, ये भी पिछला मैच नहीं खेले थे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अयाज तसव्वुर को एक और मौका दिया गया। अयाज तसव्वुर जो है, दरअसल तैमूर अली एक मैच में ये पूरी तरह फिट नहीं थे, अयाज तसव्वुर इनकी जगह टीम में आए,
इन्होंने पहले मैच में 50 रन बनाए, दूसरे में सेंचुरी बना दी, तो इसलिए उवैस ज़िया को आज जो है बाहर का रास्ता देखना पड़ा। एतमाद से इस गेंद को जाने दिया इमरान रफ़ीक ने, और इसके साथ ही 10वां ओवर मुकम्मल हुआ, 20 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। बॉलिंग में तब्दीली हुई है और काशिफ भट्टी को इंट्रोड्यूस किया है। 92 मैचेस में 349 विकेट्स काशिफ भट्टी। पाकिस्तान टीम से टूर्स किए उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन फॉर्चुनेट खेल नहीं सके हैं अभी तक कॉम्पिटेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो मेरे ख्याल से ये जो इंट्रोड्यूस किया है अर्ली लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो आई थिंक इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जब इनिशियली मॉइस्चर होता है पिच के अंदर तो स्पिनर को थोड़ा सा हेल्प मिलता है, थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छा मूव है इमरान फरहत का, और एक शॉर्ट लेग एक स्लिप के साथ काशिफ भट्टी ओवर द विकेट बॉल करेंगे, जैन इनको फेस करेंगे। यहाँ शॉर्ट लेग पर अजीम घुमन को बुला लिया गया है हेलमेट के नीचे। एक फील्डर स्लिप में भी मौजूद हैं। अच्छा सीजन रहा है ये काशिफ भट्टी का, विकेटें भी ली हैं, रन्स भी बनाए हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। काशिफ भट्टी टीम के लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हैं। ये दोनों टीमें जो हैं दरअसल हार के आ रही हैं पिछला मैच। सदर्न पंजाब की टीम जो है वो छठे राउंड से पहले तक पहले नंबर पर थी, अब नॉर्दर्न की टीम पहले नंबर पर आ गई है पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन फाइनल की दौड़ से अभी भी सदर्न बाहर नहीं हुई। रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की, अभी पहला घंटा जारी है और ओपनिंग बैट्समैन का रिवर्स स्वीप हमने देखा अटेम्प्ट करते हुए। प्लान कर लिया था पहले से, देखें गेंद बाउंस भी हुआ, टर्न भी हुआ, थोड़ा सा टाइट खेलना पड़ेगा जैन को, क्योंकि पहले 3 बॉलें बहुत मैं समझ रहा था थोड़ा सा रिलैक्स होके खेलिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम ऐसा एक बॉल ज़रूर होगा जो कि मुश्किल कर सकता है, तो यूँ आपको कंसंट्रेट ऑल द टाइम करना पड़ेगा। और फिर स्वीप किया, लेकिन फील्डर जो है ऊपर ही थे, सारे शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स स्वीप भी मारी इस ओवर के अंदर, स्वीप भी मारी। थोड़ा सा कंसंट्रेट करें, वेट करें, डेफिनेटली रन्स आपको मिलेंगे। क्रीज पे रहेंगे तो आप रन्स कर सकते हैं, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट, टेम्परामेंट। काशिफ भट्टी का सक्सेसफुल ओवर जिसमें मेडन था और मुश्किल थोड़ी सी की जैन को, तो 20 बगैर किसी नुकसान के। ये 128 खिलाड़ी पेसर्स ने आउट किए और 69 स्पिनर्स ने। ये नेशनल स्टेडियम जो पे मैचेस अब तक हुए हैं कायद आज़म ट्रॉफी 2020 के, तो पेसर्स ने डोमिनेट किया है तारिक, और 69 विकेटें ली हैं स्पिनर्स ने।
यहाँ यासिर शाह ये वाहिद स्पिनर हैं जिन्होंने इस साल नेशनल स्टेडियम में 5 विकेटें हासिल की एक इनिंग्स में। तो ये बात सही है कि पेसर्स का राज रहा है। पिछले मैच में भी जो यहाँ पर सेंट्रल पंजाब ने मैच जीता था, तो वहाँ पर मकसूद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और उन्होंने 9 खिलाड़ियों को आउट किया था। इसे स्क्वायर की तरफ खेलकर 2 रन हासिल करेंगे इमरान रफ़ीक। या तो इन दोनों को ये बात जहन में रखना होगी कि शुरू में अगर अपनी विकेट बचाए रखते हैं, पहला जो सवा घंटा है अगर ये गुजार लेते हैं तो उसके बाद रन्स बनेंगे, क्योंकि जो पिच है ये मिलती जुलती है उस पिच से जहाँ पर सेंट्रल पंजाब की टीम ने सिंध के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी पहले बैटिंग करके। सब्र का सिला आपको मिलता है यहाँ। और ये नया ओपनिंग पेयर है। जिस वक्त टूर्नामेंट का आगाज़ किया था सादन पंजाब की टीम ने, तो शान मसूद ओपनर थे, उनके साथ जीशान अशरफ थे। शान मसूद न्यूजीलैंड में है, जीशान अशरफ वो आउट ऑफ फॉर्म थे। दरअसल आज वो टीम में जगह नहीं बना सकते थे। इमरान रफ़ीक जो इससे पहले ओपनिंग करते रहे, उनको वापस आया गया उनकी पोजीशन पर, असल पोजीशन पर जैन के साथ। इनके पास एक सीनियर ओएस जिया भी हैं और आई थिंक एक मैच ताज वली को फॉरेन से लेकर आए। बॉलिंग में तब्दीली किए, बहुत ही बोझ होगा दोनों फास्ट बॉलर्स के ऊपर, ताज वली और उमैद आसिफ। ऑफ स्टंप के बाहर गिरा हुआ बॉल को जाने दिया इमरान रफ़ीक ने। यहाँ जो है ये पहले सेशन में कम से कम एक एंड से फास्ट बॉलर को तो आपको बॉलिंग कराना होगी जिस तरह के हालात हैं, क्योंकि आज कराची में सुबह के वक्त खासी धुंध थी और तरावत ज़्यादा है इस पिच पर। और खुरम शहजाद इनके लिए अच्छी बॉलिंग करते आए थे पहले मैच से पहले तक बलूचिस्तान के लिए, जो कि सीम बॉलर हैं। 5 विकेटें भी उन्होंने इनिंग्स में हासिल की, लेकिन वो थके थके लगे आखिरी मैच में। यही वजह थी कि यहाँ पर 2 ही पेसर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया। कई बार इस तरह की पिच पर, इस तरह के हालात में आप तीसरा पेसर ना खिला के अपने हाथ कटवा देते हैं। पिछले मैच में अगर सिंध की टीम को देखें, 4 पेसर्स खिलाए थे और ताजवली के ओवर का अख्ताम 22 बगैर किसी नुकसान के। ये सदर्न पंजाब की टीम जिन्होंने अपना पहला मैच नॉर्दर्न के खिलाफ जीता था नेशनल बैंक ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कराची में इनिंग्स और 96 रन से। काशी भट्टी ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी पेश की थी। उनके अलावा जो विकेट कीपर हैं बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने इस मैच में सेंचुरी बनाई थी। दूसरे मैच में इन्होंने बलूचिस्तान को शिकस्त दी यही नेशनल स्टेडियम में। इस मैच में मोहम्मद अब्बास की कारकर्दगी बड़ी शानदार थी और सलमान अली आगा की भी, जो बहुत अच्छी फॉर्म में रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान की टीम जो है ये पहला मैच जीतने के बाद इन्होंने रिवर्स गियर लगाया हुआ है, क्योंकि आज बॉलिंग भी उतनी मुतवाज़िन नहीं लग रही।
बैटिंग में भी कदरे मुश्किलात हैं, ज़्यादातर खिलाड़ियों को सेकंड 11 से लाना पड़ा। तारिक, टीम कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आपका सीज़न स्टार्ट होता है, तो आपने एक राइट कॉम्बिनेशन जो है वो इस दफ़ा डाउन द विकेट जैन ने ये शॉट खेला मिड ऑन के ऊपर से और 4 रन हासिल किए। बड़ा वेट किया बॉलर के हाथ से बॉल निकलने के बाद। हाँ, ये बाउंड्री को क्लियर कर गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। इस मैच का पहला छक्का लगाया। पिछले ओवर में भी रन्स बनाने के लिए कोशिश थे स्पिनर के खिलाफ, क्योंकि फास्ट बॉलर ज़्यादा रन्स नहीं दे रहे यहाँ पे। जैसे मैं बात कर रहा था कॉम्बिनेशन, राइट कॉम्बिनेशन वो आपका बन जाए तो फिर आपकी टीम सीज़न अच्छा परफॉर्म करती है। आई थिंक बलूचिस्तान में थोड़ी सी कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं आ पा रही। पहला मैच जैसे आपने कहा जीतने के बाद एकदम डाउन हुई है। पिछला मैच भी ये हारे हैं केपीके से। पुश किया कवर में, बहुत अच्छी शॉट खेली है जैन ने। आई थिंक तीसरे रन के लिए तैयार होंगे और आराम से जैन ने ये 3 रन बना लिए। अच्छी बैटिंग जैन अब्बास की तरफ से। ओवर का अख्ताम 31 बगैर किसी नुकसान के। ताज अली ये मुसलसल बॉलिंग कर रहे हैं, लंबे स्पेल करने की इनमें अहलियत मौजूद है और इनकी बॉलिंग का बड़ा दारोमदार जो है वो इन्हीं की कारकर्दगी पर है, क्योंकि इसमें तो कोई कलाम नहीं कि ये लंबे स्पेल कर सकते हैं। लेकिन देखना ये कि दूसरे एंड पर जो इनके बॉलिंग पार्टनर हैं, फास्ट बॉलिंग पार्टनर जो हैं, क्या जो उमैद आसिफ हैं वो भी लंबे स्पेल कर सकते हैं या नहीं इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। अच्छा बॉल ऑफ स्टंप की लाइन पे पड़ा, हल्का सा बाहर गया, चेस कर गए थे जैन, लकी रहे यहाँ पर। अच्छी लाइन के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, ये देखें ऑफ स्टंप। ये जो टीजिंग लेंथ होती है बैट्समैन के लिए, यहाँ पर बैट्समैन जाता है और कंसिस्टेंट अगर ये लाइन रखें ताजवली तो कामयाबी मिल सकती है इनको यहाँ पर। और आप जैसे बात कर रहे हैं इनको करनी पड़ेगी, अगर नहीं भी कर सकते, लेकिन अब आपको ऊपर आप पर भारी जिम्मेदारी है एज ए सीनियर फास्ट बॉलर। उमैद आसिफ और ताजवली दोनों सीनियर बॉलर हैं और यहाँ पर बहुत ज़रूरत होगी टीम को, क्योंकि कोई तीसरा फास्ट बॉलर सच नहीं, और एक तरफ से जाहिर सी बात है आपको फास्ट बॉलर्स लगा के रखने होंगे। ये खुरम शहजाद हैं, उनके साथ मोहम्मद अला हैं। मोहम्मद अला भी सीज़न में हमें खेलते हुए नज़र आते हैं। ये दोनों पेस बॉलर हैं जो कि टीम में जगह नहीं बना सके। इमरान फरहत की ज़रूर वापसी हुई है। तो एक सवाल जो मैं महमूद हामिद के सामने रखना चाहूँगा कि जो पिछले मैच की पिच थी उससे ये वाली जो पिच है, ये 22 गज की पट्टी, ये कितनी मुख्तलिफ लगी है अभी आपको ये 13.4 ओवर्स के खेल में महमूद?
पिछले मैच में भी सिमिलर लाइक शुरू में इसी तरह खेला था पिच ने, थोड़ा सा सॉफ्ट थी शुरू में, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखें शाम का वक्त आया तो बॉल आने लगा था बैट के ऊपर, बड़ा अच्छा बाउंस अच्छा हो गया था, हार्ड हो गया था पिच। तो फिर बाद में पिच बहुत ही अच्छा खेला, लेकिन इनिशियली इसी तरह की मूवमेंट हमें पिछले मैच में भी नज़र आई थी, और मेरे ख्याल से सिमिलर टाइप ही पिच लग रहा है, लेकिन जितनी धूप इसके ऊपर लगती रहेगी ये हार्ड होती जाएगी पिच, तो मेरे ख्याल से उसके बाद अच्छा बाउंस भी मिलेगा, और जो है फिर शॉट्स भी ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे। तो सो मेरे ख्याल से क्योंकि 4 डे की पिच होती है तो फ्रेश पिच इनिशियली ऐसे ही होती है। जी हाँ, और इस पर तुर्रा जो है वो आज का मौसम है, जिस तरह आज अहमद नकवी ने कहा था दाग दाग उजाला है आज के दिन। अभी जो प्री मैच शो था उसमें 31 पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं। गुड चल। हाँ भाई, चलो चलो बॉयज, चलो बॉयज, चलो बॉयज। जानी क्या भाई, उधर ये चलो चलो चलो, इमरान ने बुला लो, कोई बात नहीं, उसके बाद में नहीं करो। आजा आजा आजा, चलो चलो आगे रहना, मेरा जजे एक ना हो, जजे आगे रहना। सदर्न पंजाब की टीम आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। क्या जी, आजा आजा इमरान भाई, आजा। बहुत आला इमरान भाई, वो है उनके पास एक एज था होम टीम होने के नाते कि वो पहले बॉलिंग कर सकते थे। ये आप देख सकते हैं कराची में आज दर्जा हरारत जो है कदरे कम है, 25 डिग्री सेल्सियस। ज़रा मुख्तलिफ सुबह है। अगर पिछले हफ्ते के वेदर के साथ आप देखें तो अभी आपको थोड़ा सा हेजी वेदर नज़र आ रहा है आपको, और जिसे कहना चाहिए क्लियर नहीं है चीज़ें। सो आज थोड़ा सा डिफरेंट है, ओस भी आज काफ़ी जो थी, विंड हवा भी नहीं, हवा भी नहीं। स्ट्रोक खेलने में जल्दी करनी पड़ी। जैन अब्बास रन्स बनाने के मूड में थे काशिफ भट्टी के खिलाफ, लेकिन इमरान रफ़ीक जो हैं ज़्यादातर ब्लॉक कर रहे हैं। अभी तक 39 गेंदों में 9 रन्स बनाए हैं, और विकेट कीपर जो हैं ये बहुत ज़्यादा विकेटों के पीछे मुझसे लग रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान मुसलसल हौसला अफजाई कर रहे हैं, टीम के नायब कप्तान भी हैं बिस्मिल्लाह खान। ऑन साइड में इस मरहले पर 6 फील्डर हैं काशिफ भट्टी के लिए, इसीलिए ऑफ साइड में खेल दिया। अच्छा रिवर्स स्वीप देखने में आया, 4 रन्स मिल जाएंगे। और पूरी स्प्रिंट लगाई फील्डर ने, लेकिन बॉल जाके हल्का सा रो पे लगा। रिवर्स स्वीप खेला था। ओवर के इख्तिताम 36 बगैर किसी नुकसान के। या जैन अब्बास ने ये कुछ देर पहले ये स्ट्रोक कोशिश की थी लगाने की, लेकिन कनेक्ट नहीं कर सके थे। इस बार उन्होंने खाली जगह देखी और दोबारा वो अटेम्प्ट हुए। इस बार बेहतर एक्सिक्यूशन थी, 4 रन्स मिले। इस मैच के जो अंपायर्स हैं एहसन रज़ा हैं, अच्छे अंपायर्स में उनका शुमार किया जाता है। उनके साथ दूसरे एंड पर प्रोफेसर आफ्ताब गिलानी जो हैं, ये 4th अंपायर हैं।
टॉप के अंपायर्स में शुमार किया जाता है, आसिफ याकूब का और एहसन रज़ा का। आसिफ याकूब ने पिछले मैच में भी अंपायरिंग की थी। जोर लगाते हुए ताजवली, पहले घंटे का खेल जारी है। आई थिंक आखिरी ओवर होगा। ड्रिंक्स ब्रेक और 3 स्लिप, गली, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ। ताजवली कोशिश कर रहे हैं ऑफ स्टंप की लाइन से बॉल करें, वहां पर बैट्समैन को मुश्किल में डालें। पिच बॉल इस दफा अच्छी जो है, तक मैं जो बैटिंग देख रहा हूँ, कवर कर रहे होते हैं ऑफ स्टंप की लाइन को दोनों बैट्समैन, और ख़ासकर जैन तो बहुत ही अच्छा, उनकी मुझे बैटिंग स्टाइल अच्छा लगा है। और रन्स के लिए भी तैयार रहते हैं कि जहाँ पर उनको बैट बॉल मिले वो उस पर कोशिश करते हैं कि रन्स मिलें। लकी भी रहे थे जैनबाज, जो उनका ताजवली की बॉल पे 3rd स्लिप में कैच छूटा था। उसके बाद कंसंट्रेट करते हुए, लेकिन रिवर्स भी बड़ी जल्दी खेल रहे हैं। शायद मॉडर्न डे ये क्रिकेट है। ये देखिए कैच गिराया था, याद तस्वुर दूसरी स्लिप में मौजूद थे। अच्छे फील्डर्स में इनको गिना जाता है, लेकिन ये आसान सा कैच गिरा दिया। सिर्फ फील्डिंग ये गैर म्यारी रही है, ये हमें कहना पड़ेगा। याद तस्वुर 12वें खिलाड़ी थे जब यहीं पर नेशनल स्टेडियम में इन्होंने बलूचिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा आउटफील्ड में कैच पकड़ा था। स्लिप में शायद ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है। तो वापस आते हैं इनके जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन और 2 फास्ट बॉलर, ये जो खिलाने का मामला है इस तरफ। आमतौर पर जब आप 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर के साथ खेलते हैं तो फिर कप्तान की यही कोशिश होती है टॉस जीतकर पहले बैटिंग की जाए, और अगर ऐसा नहीं हो सके तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो पहला सेशन होता है ऐसी पिच पे जो ग्रीन भी लग रही हो, तो फिर एक एहसास रहता है, शायद वो कमतरी का एहसास जो बॉलिंग करने वाली टीम है, और यही सेशन सबसे मुश्किल भी होता है 2 फास्ट बॉलर के साथ। महमूद जी हाँ, बिल्कुल। तारिक उनकी तरफ खेला था, 1 रन बनाने में कामयाब हुए। ओवर का इख्तिताम 37 बगैर किसी नुकसान के, और पानी का वक्फा भी। एहसान शुक्र है सर, दुआएं आपकी।
Welcome back after the break. So first hour of the day is gone. 37 for no loss is Southern Punjab at the moment. Hard times for them. They chose to bat first on this bowling friendly wicket, I looked, and on the other hand, I think Balochistan have missed the trick. They've just gone with two seamers on this green wicket. They've opted for two spinners. That's Kashif Bhatti and Jalal Khan. A bit strange decision in my opinion, considering that 3 out of 5 top order batsmen from Southern Punjab are left-handers. That's one thing to consider when you're choosing your team. Having somebody like Mohammad Tala and Khurram Shahzad in your lineup. Back after the break. That's quick single taken. So yes, considering that you have Mohammad Tala, somebody like Khurram Shahzad in your lineup, you're still opting for two spinners and just two fast bowlers. A bit strange decision in my opinion. Ask Faisal Iqbal. You're asking the wrong man. You know, this puts extra pressure on these spinners. I mean, you got to have 3 seamers. I mean, you can just clearly tell from here, even looking up from the commentary box. We've seen time and again. This happened with Sindh as well. They went in with 3 seamers and an all-rounder, and they were missing out on 1 bowler. And they were majorly missing out on that, and that did prove out to be very decisive in terms of the result. They couldn't bowl the opposition out on day 4. Only time will prove how this particular combination works for Balochistan. 2 left-arm spinners against predominantly left-hand batting. Yes, I thought of it too, but then I said maybe I become too critical about things. So let's see how it goes through the day. Essentially, Punjab on the other hand have had a very cautious start. Some good areas bowled by Taj Wali especially. A couple of drop catches that also has gone in their favour. So we keep talking about the first 1.5 hours is going to be testing. So when you get that opportunity, you got to grab it. Otherwise, you just put that to waste. 17 gone, 40 for none. Azam now being brought in place of Taj Wali. These are the only 2 fast bowlers this Balochistan side has in their side. So a lot of work will be done by these 2. This bowled 5 overs, 2 made and 10 runs is given away. I guess talking about the teams, and in contrast to the other side, Southern Punjab, they've got 4 seamers. Ziaul Haq, Mohammad Ilyas, Mohammad Imran, Amir Yamin also in their side. They look more in control with the sides at least. Shorter one to start off things. There's been testing times for the batsmen also, because the pitch was on the softer side. Slow movement also. Runs have been hard to come, but they've done well. They've been supported by the fielder. The catch was gone down of Zain Abbas by a Yasir in slip area. So you got to take your chances on such pitches. Southern Punjab have a very good batting lineup if you just look at it. Umar Siddique, Zain Abbas, Salman Ali Agha, the top run getter of this tournament so far, is done well. It's been a revolution. Also Amir Yamin, Mohammad Imran, they all can bat. They bat deep down till 8.
Impressive, he bats at number 6, Salman, and he's the highest run getter, which tells you two things. Either the top order isn't performing and he gets his turn quite early, or he scores very quick. Even at number 6, he manages to get some quick fire runs and adds to the total, and finds himself as the top run getter up till now. 600 plus runs in the tournament. It's a good ball. Held its line, had a bit of bounce as well, but not as much as the batsman would have liked, so it goes under the bat. Oh, I'll take my words back, that's been collected right at the toes, so not much bounce. That's Salman right on top from Southern Punjab. 11 innings and 600 runs for him. Northern has got 2, Umar, then Umar Amin. So Shakil has been good as well. Hasn't really scored in the first innings though. Always gets some runs the second time around. Yes, talking about Salman Ali Agha. He plays at that number 5 or 6 he bats on. He can bowl well also. A very good fielder also. So very good young prospect for Pakistan. He's got a best of 169 and a very good average of 75. So definitely a one for the future for Pakistan. He was picked by Lahore Qalandars also, but never got a game. Very strange. Good to see Ahmad Azam also, another all-rounder. 10. It's very good to see these youngsters scoring runs. You look at that top 5 batsmen, all 5 of them actually, and you look at their highest scores in this tournament. You see the 169, 174. None of these have been scored at the National Stadium. Either they've scored these at UBL or State Bank or National Bank grounds. None of these scores are here. The runs have been hard to come. These pitches have been fast bowling friendly, not even spinners friendly, but fast bowling friendly. And even here you can see it's green top, a little on the slower side, but still green. So runs have been, and anyone who scored runs here must be very talented, because you need to have the right technique to get some runs. You need to be very patient. You got to wait for the bad balls and then get to score runs. There you can see Pacers 128 wickets, spinners just 69. So this shows the batting has been difficult against fast bowlers. Why didn't you show this to the Balochistan coach before the team selection? He's got 2 spinners, 2 left-arm spinners. Definitely missed the trick here. And somebody like Khurram Shahzad, who's bowled so well in this tournament, and Mohammad Tala also. I was excited to see Mohammad Tala. He's been there for ages. Khurram is not playing? No, you're kidding. He's not in the side. That's how I reacted when I saw the team. It's a bit tough now, even in terms of top order batsmen. This morning I was talking to Owais. Yeah, he was also, well, any batsman who's left out would feel disappointed. But I don't know if I should say spoiled for choices, Faisal Iqbal, because Imran Farhat is back, he's fit, so he's got to play him. He's got the seniority. There's Owais, yeah. Now, the choice was between Owais and Azim Guman. Both these guys, Owais and Azim, have scored hundreds at the second 11, so it's a tough choice. I guess he's gone with a right-hand option compared to Owais Zia's left hand, because Imran Farhat is already a lefty, but I don't know if that was the criteria of selection. He had to choose one. Only difference is that the brand of cricket, Azim Guman or Owais Zia, plays completely opposite of each other. Owais is very attacking, Azim takes his time. 19 gone, 42 for none. Yeah, these are the lines. These are both of the teams. Balochistan, yeah, the Bismillah Khan, the wicketkeeper, the server also can bat. The problem I see is that when Jalad Khan is playing in place of somebody like Khurram Shahzad or Mohammad Tala,
Akbar Rahman also can bowl. So they've got 3 bowling options, 3 spinners options. They could have easily opted for either of them. I would have wanted ideally to see Khurram Shahzad in this side, and also Mohammad Tala. I think they both would have enjoyed bowling on this pitch. And now they're struggling. They need to get one more medium pacer or fast bowler in this side. It could be very hard work for these two, Umaid Asif and Taj Wali. This has been the trend. Just let it go on this ground, National Stadium. Lots of leaves and dot balls. Batsmen have been just easy. They're just taking their time to get runs. In the last match we saw the first day, they took so many deliveries to get runs. It seems like the same is the trend here. That's Taj Wali. You got to be fit because you are bowling many overs today. Rafiq opening the batting this time for Southern. He's played in middle order also at 5, 6, all the numbers. Such a handy cricketer. He takes his time, gets runs, It's so hard to get out this Ali Rafiq. He hardly plays a bat shot. He's taken 62 deliveries for his 14 runs. Zain Abbas 28 of 54. He's looked more attacking than him. Ooh, that's a sharp ball. Even the batsman acknowledges. Just gets a bit shaken up by that bounce and the pace off the wicket. Exactly why you need to have your third fast bowler in this side. Because this pitch definitely has something for the seamers. And you don't have a third seamer in your side. Talking about this pitch. 25th of October is when Quaid Azam Trophy started here on this ground. And you're talking about, this is round 7, so you talk about 7 games. That's 28 days of cricket on these pitches. Plus you add the playoff games, which will be 4 more, that's 32. And then you go to the remaining 3 rounds in the league stage, which is another, what, 21? No, sorry, 12 plus a 5-day final. That's 17 more days of cricket on these wickets. This is a lot of work for groundsmen. Still doing very well, this square. Talking about 45 days of Quaid Azam Trophy on this pitch, and then plus 4, that's 49. 49 days on these pitches, and then you have the first test with South Africa over here. The only time this will get some rest is after 5th of January until South Africa comes, because they'll shift the Pakistan Cup, the ODI tournament, domestic tournament, elsewhere. One just hopes that this square doesn't get tired. Yes, I think they've done a good job, these groundsmen, although, as you just mentioned, they don't have much time to prepare these pitches. And in my opinion, these pitches have offered something for everyone. That's it, straight to the man, first wicket. Finally, it's paid off for Umaid Asif and Balochistan. Very good delivery to get this first wicket of Ali Rafiq. I asked the server taking the catch in the slips. He dropped one earlier, but made no mistake this time. Extra bounce, just a tentative push outside, and this time Tasawwur doesn't make a mistake. Hard work pays off for Umaid Asif, being persistent outside the off stump. It was a good over, he was setting him up. Imran Rafiq goes for 14, and Southern Punjab lose their first at 42.
Still hazy out there. The temperatures will fall as per the Met Department. By the end of this week, the temperatures will fall down to 10 degrees lowest. That'll be very early morning temperature. That's low for Karachi. And will continue till about 10, 11 in the morning. We'll still have lower temperatures around the 20s, little less than that. Of course, you get those Siberian winds that come in, which were there a week ago. They plan to come back again. And that's when you get that strong breeze blowing across here at the ground. That's the wicket there, just a push. Ayastas over this time, grabs it to his left. It was the same bowler, so it's good. Yes, a left-hander has been replaced by a left-hander. The captain Umar Sadiq now coming into bat. This is a heavy top order for Southern Punjab. They've all got runs in this tournament so far. Umar Sadiq getting the starts, but not converting those starts into big ones, but he still have runs. Same is the case with Zain Abbas. Kashif Bhatti being brought in just inside 10 overs with this new ball. It's not expected though, because the pitch had something to offer to fast bowlers. Onto the back foot, guided away towards square leg, one taken. Taking over from Shan Masood, Umar Sadiq has the captaincy, 78th game for him. Got a good, healthy average. Can be better as well because he's the top order bat. 187 not out is his highest. Led his side well in the previous game here. They'd like to come back up in the points table because they slipped down after that draw in the previous round, round 6. But they're still not very far away, just a game away from the table topper. Yeah, Umar Sadiq comes from a cricketing family. His brothers, both of the brothers play cricket. His father was a very good umpire, Sadiq Khan. Khurram Sadiq, Kashif Sadiq, his brothers also played cricket. And that's how the scorecard of Southern Punjab looks like. Zain Abbas not on 29. Ali Rafiq lost his wicket to Umaid Asif 14. Now it's up to Umar Sadiq now. And a bit of batting to come. But there isn't into forms, he's into runs. Imran Umar and that man Salman Agha, who's the top run getter of this tournament, is in tremendous form. And he would definitely like to bat on this pitch also, because this pitch has something to offer if you can wait for the bat balls and then play your strokes. Two slip and a gully for Umaid Asif. Square leg has been taken, deep square leg, deep fine leg also in place. No! You know, although the runs have been tough to come by, but the only problem I see with the batting lineup here is the lack of rotation of strike. They've not been able to take many singles. All the teams that I've seen in this tournament, especially overhead in this ground, they've just not been able to take many singles. What could be the reason? Sikandar, not liking to run much. Well, it's an art to hit a boundary. I mean, it's still there. You can use more power or timing to it, but singles is a lot more. You've got to improvise, find those gaps. Sometimes use softer hands. You in a boundary, you're the only one who's doing the job. In rotating strike, you need your partner as well, so you need understandings.
This is this game up till now, 109 dots. It took around 4-5 overs to get off the mark, Southern Punjab. But just 9 singles in the 43. Sides that have rotated the strike well. In a couple of games we saw Northern, KP, one of the games Sindh. When they rotate strike well and the scoreboards keep sticking, we've seen results have come their way. They don't struggle thinking they're not getting boundaries, that scoreboard is not moving, so the batsmen are not making any unnecessary mistakes. And no wonder those two teams you just mentioned, Northern and KP, were at the top of the order. This table chart we see, that's how Umaid Asif bowled the previous over. Just taken to the one line, great line. Just this time, the batsman edging it to Ayaz Sabur, made no mistake this time. You've got to take your catches. He's bowled well, although a T20 specialist, Umaid Asif, but he's done well here also. Tall, fast bowler, gets the length right. That's again well bowled. That's the length we've been talking about. You got to be bowling here more. The Iron Man of Pakistan cricket, Umaid Asif. Two other games, Khyber Pakhtunkhwa versus Sindh at the State Bank ground. Toss was uncontested. Sindh chose, well, it's got to be Khyber Pakhtunkhwa who chose to field. So that's how it's going to be uncontested. Sindh, first innings, 43 for none. Shurjeel, 32 not out. Northern versus Central Punjab at the UBL. Toss was won by Northern. They chose to bat. 40 for 3. Wow, Omar Amin 16 and Jamal Anwar 5. That's the two batsmen at the crease. Hassan Ali gets 2 for 13. Waqas gets 1 for 14. So, yeah, Northern in trouble after deciding to bat first there. Yeah, Hassan Ali getting 2 wickets early on. So important that he gets into wickets. He bowled well the last time he was there at National Stadium, Karachi. Got 4 wickets in the last inning. He was running well. The rhythm was good. Bowling into the right line areas. It's so important for Pakistan cricket that he gets going, because he is one excellent fast bowler. It's so disappointing for me to see that he's not been able to make his place into that fast bowling bunch that we have now. So if he can get few wickets, he will be considered, yes. Oh. 22, and it's 44 for 1. चलो boys, Shaba boys. Yo! काशिफ भट्टी बहुत लंबा स्पेल कर रहे हैं। आज अभी तक उन्होंने 20 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं की। उनको लेफ्ट हैंडर से ही पाला पड़ा है इस सेशन में। जैन अब्बास, उमर सिद्दीक बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। इनके अलावा इमरान रफ़ीक जो आउट होने वाले बैट्समैन थे वो भी लेफ्ट हैंडर थे। और दिलचस्प बात यह है कि इनके जो पहले 3 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे टीम से बाहर हुए, हुसैन तलत, जीशान अशरफ, शान मसूद, वो भी तीनों बाएं हाथ के बैट्समैन थे। टॉप ऑर्डर को लगता है कि टॉप ऑर्डर जो है उनके बाएं हाथ का ही खेल है सदर्न पंजाब के लिए। लेकिन मेरे साथ दाएं हाथ के बैट्समैन हैं इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में, महमूद हामिद। काशिफ भट्टी को डेफिनेटली लंबी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 फास्ट बॉलर्स के साथ बलूचिस्तान की टीम ये मैच खेल रही है। और इसमें जो अब तक मुझे नज़र आ रहा है कि पेसर्स ही यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। और अगर आप हिस्ट्री भी देखें इस सीज़न की, तो उसमें भी पेसर्स ने ज़्यादा आउट किए हैं।
एक मेरे ख्याल से एक पेसर और होना चाहिए था, और इनके पास जो बेंच पे अगर फास्ट बॉलर्स देखें तो 2 फास्ट बॉलर्स जो हैं, तला और खुर्रम शहजाद, लेकिन उन दोनों में से किसी को उन्होंने प्रेफर नहीं किया। तो ओवर का इख्तिताम 45 पे 1। अभी तक उमैद आसिफ ने ही विकेट हासिल की है। ताज वली बदकिस्मत रहे, उनकी गेंद पर कैच गिराया था जैन अब्बास का अयाज तसव्वुर ने दूसरी स्लिप में। बेहतर गेंद थी, अच्छा स्पेल किया है उमैद आसिफ ने, ख़ास तौर पर फार एंड से जाकर कोशिश कर रहे हैं कि बैट्समैन को खेलने पे मजबूर किया जाए। खासे तवील कामत हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का खासा तजुर्बा भी है। उनकी जो जसामत है ये पहले के मुकाबले में मजबूत हुई है। बहुत दुबले पतले थे, मुनहनी से उमैद आसिफ जिस वक्त नए नए आए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, सियालकोट से ताल्लुक़ है, लाहौर में क्लब क्रिकेट खेली है। थोड़ा सा ऑफलाइन हुए, अंदर लाना चाहते थे लेकिन मिडिल लेग स्टंप पे गिरा, उसको बड़ा अच्छा खेला मिड विकेट की तरफ जैन ने। राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए उमैद आसिफ, 2 स्लिप, 1 गली, पॉइंट कवर, मिड ऑफ साइड की फील्ड। उमैद आसिफ अब फिर चेंजिंग की है, अब ओवर द विकेट वापस आ गए उमैद आसिफ। डीप स्क्वाड लेग पे एक फील्डर लिया हुआ है कि बैट्समैन को थोड़ा सा शशो पंज में रखना कि बाउंसर किसी वक्त भी आ सकता है। आगे पिच हुआ हुआ बॉल था, उसको खेला है। ओवरऑल मैंने अब तक जो देखा है तारिक, बाउंसर्स जो हैं वो बहुत कम करते हैं बॉलर, फील्डर ज़रूर रखते हैं लेकिन बहुत कम। पहले तो हमने देखा था होता था फास्ट बॉलर को आप एक चौका लगाना, उसके बाद वो बाउंसर्स का अटैक आप पे शुरू कर देता था, लेकिन वो चीज़ जो है वो थोड़ी सी कमी मुझे नज़र आती है। ज़रूरी होता है कि आप एक आध बाउंसर दें, बॉलर जो है वो फिर बैकफुट पे रहता है, बैट्समैन सॉरी। जी हाँ, लेकिन हम यही देखते हैं कि नई गेंद के साथ जो है वो बॉलर ज़्यादा आगे गेंद गिराकर स्विंग करने की कोशिश करते हैं, और ये ब्लफ करने के लिए एक आध फील्डर जो है वो ज़रूर पीछे ले लेते हैं। अब उस फील्डर को भी स्लिप पोजीशन पर लाया गया। तैमूर अली थे जो पहले डीप स्क्वायर लेग पर थे, इस मरहले पर वो तीसरी स्लिप में है। गली उसके अलावा है उमैद आसिफ के लिए। यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी कराची किंग्स के लिए। उमैद आसिफ ने इसी एंड से बड़ा अच्छा स्पेल किया था। इस बार बॉडी लाइन गेंद करने की कोशिश की। ये देखिए, ये फिर से ब्लफ करने गए थे, स्क्वायर लेग के फील्डर को स्लिप पोजीशन पर लाया गया और गेंद को पीछे गिराया। उमर सिद्दीक जो है समझ रहे होंगे कि गेंद अब आगे आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये क्या जिसे कहना चाहिए बैटल होती है कि आप दोनों एक दूसरे के माइंड से खेल रहे होते हैं। तो फास्ट बॉलर भी यही कोशिश कर रहा है कि बैट्समैन जो है वो उसमें रहे कि
कब बाउंसर करें। इस दफा ओवर पिच बॉल था, उसको ड्राइव किया है कवर ऑफ मिड ऑफ के बीच में से, दो रन ही बन सके। आसिफ को ओवर का अख्ताम 50 एक विकेट के नुकसान पर। सदर्न पंजाब ने अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए। ये अच्छा सेशन उनके लिए रहा है। आज उन्होंने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का इंतखाब किया और इनकी जो ओवर रेट है वो भी अच्छी है। अभी तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट का भी खेल नहीं हुआ और 24 ओवर्स इनने कर लिए हैं। इसकी एक वजह काशिफ भट्टी है जिनका ये 8वां ओवर है। तकरीबन 1/3 ओवर्स स्पिन बॉलर ने किए हैं पहले इस सेशन में। इससे ओवर रेट का तो कोई मसला नहीं होगा। बलूचिस्तान से अच्छे बॉक्सर आते रहे हैं। फैसल इकबाल जो हैं वो आपको बॉक्सिंग करते हुए नज़र आए थे। ये देखिए ये 8वां ओवर है काशिफ का। इस वक्त तीसरे फास्ट बॉलर की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है बलूचिस्तान की टीम को, जिनका ख्याल था कि वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना चाहेंगे। पहले बैटिंग यहाँ पर हमने देखा पिछले मैच में भी। इस दफा स्वीप किया और स्वीप हार्ड किया है। उन्होंने देखा कि दोनों फील्डर जो हैं वो ऊपर लिए हुए हैं काशिफ भट्टी ने, तो उसका फ़ायदा उठाया जैन अब्बास ने और बहुत ही अच्छी शॉट फील्डर के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए। तो 4 रन यहाँ पर हासिल किए जैन अब्बास ने। या स्पिनर पर आज हावी होने की कोशिश कर रहे हैं शुरू से ही। काशिफ भट्टी के खिलाफ इससे पहले एक छक्का लगा चुके हैं। 5 चौके सदर्न पंजाब की इनिंग्स में शामिल हैं। तो मुखालिफ टीम में लेफ्ट हैंडर्स की बहुतात है सदर्न पंजाब की टीम में, तो फिर बाएं हाथ के जो 2 स्पिनर्स हैं उनको खिलाना ये भी महंगा सौदा हो सकता है। अभी तक यही हुआ है काशिफ भट्टी के खिलाफ, जिस आज़ादाना तरीके से जैन अब्बास बैटिंग कर रहे हैं। ये 31 गेंदों में 21 रन बनाए हैं काशिफ भट्टी के खिलाफ जैन अब्बास ने। 54 पर 1। bowling change, left arm over. जैन अब्बास ने आज फ़ायदा उठाया उस गिरे हुए कैच का जो अयाज तसव्वुर ने दूसरी स्लिप में छोड़ा था। और अच्छी पोजीशन है इस वक्त सदर्न पंजाब की। 54 रन उनने बनाए हैं। ताज वली अब अपने दूसरे स्पेल में आ गए हैं। इसी एंड से 2 स्पेल जो हैं वो कर चुके हैं उमैद आसिफ, 2 मुख्तलिफ एंड से राधा। ताज वली को उनके फेवरेट एंड से लाया गया है। 3 स्लिप्स और 1 गली के साथ बॉलिंग करेंगे। इनके पास एक जो ऑप्शन हो सकते हैं अभी इस मरहले पर, एक तो जल्लाद खान है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, या फिर अकबर रहमान वो लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं कभी कभार। ताज वली ने जो इनिशियल ओवर किए थे अच्छा इन्होंने लाइन थी, लेकिन उसको कवर करते हुए दोनों बैट्समैन खेलते गए। ये
कैच जो छूटा था, कोशिश उन्होंने ऑफ स्टंप की लाइन पे की है कि इस जगह को स्ट्राइक करें, लेकिन बैट्समैन उसको अच्छा मैनेज करते गए। एक कैच छूटा, आखिर में एक विकेट लेने में फिर कामयाब हुए, वो भी स्लिप में ही गया था। और जब भी ये बॉलिंग करते हैं, ये बार बार अभी जो हम देख रहे थे इनका पहला स्पेल, तो इनके हलक से एक आवाज़ निकलती गेंद डिलीवर करते हुए, जिस तरह टेनिस के खिलाड़ी शॉट लगाते हुए हम अक्सर उनको सुनते हैं। जब बॉलर जान लगाता है डेफिनेटली साउंड आ जाता है, और बहुत से बॉलर्स और जो प्लेयर्स होते हैं उनका साउंड ज़्यादा तेज़ होता है। तो ताज वली जो हमें साउंड बहुत साफ नजर आवाज़ सुनाई दे रही है। इस दफा थोड़ा सा स्टंप पे गिरा था बॉल, क्योंकि फाइन लेग पे कोई फील्डर नहीं था, ऑफलाइन हुए थे और फ़ायदा उठाया उमर सिद्दीक ने और अपने पहला चौका लगाने में कामयाब हुआ है। विदाउट फाइन लेग ताजवली बॉलिंग करते हुए ऑफलाइन होंगे, अंदर को लाएंगे तो फिर जो है वो यहाँ पर रन्स ज़रूर बनेंगे। अब तक उन्होंने जो बॉलिंग की थी, जो हमने देखी है ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर वो करते रहे, वो इस दफ़ा थोड़ी सी अपनी लाइन चेंज की थी, जिसका फ़ायदा उठाया उमर सिद्दीक ने। कुछ बॉल था, उसको हल्का सा पुश किया। उमर सिद्दीक के भाई थे काशिफ सिद्दीक, तारिक, वो हमारे साथ उन्होंने क्रिकेट काफ़ी खेली है, अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे वो भी, और साथ लेग स्पिन बॉलिंग भी करते थे। उनके फादर जो थे अंपायर मरहूम सिद्दीक खान साहब। और सिद्दीक खान लाहौर में एक बहुत ही फेमस क्रिकेट क्लब रन करते थे अपनी ज़िंदगी में, लुधियाना जिमखाना, जहाँ से वसीम अकरम और भी बड़े बड़े क्रिकेटर निकले। काफ़ी खिदमात हैं इनके ख़ानदान की, क्रिकेट का खेल इनको विरसे में मिला है। उमर सिद्दीक को अच्छे बैट्समैन हैं, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं इस सीज़न में मुसलसल, कप्तानी भी बेहतर की है इन्होंने शान मसूद के जाने के बाद। उमर सिद्दीक ने वसीम अकरम हमेशा इनके वालिद बहुत हाई रेट करते थे क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र के तौर पर भी। सिद्दीक खान इंटरनेशनल मैचों में भी मैदान में नज़र आए थे अंपायरिंग करते हुए। ओवर मुकम्मल हो गया यहाँ ताज वली का 58 पर 1। जल्लाद खान आए हैं, फ्लाइट के साथ पहला बॉल किया था, उसको जैन ने स्वीप किया। और अगर दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं इनके पास, अगर स्पिन ऑप्शन देखा जाए तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, बहुत इजी हो जाता है बैट्समैनों के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। अगर ऑफ स्पिनर होता तो शायद एक डिफरेंट सिनेरियो हो सकता था। इस दफ़ा स्वीप करने गए थे, थोड़ा फिर फ्लाइट के साथ जल्लाद ने बॉल किया था, थोड़ा सा लूप्स दे रहे हैं उनको जल्लाद खान। सिद्दीक स्वीप करने गए थे, डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर ले लिया है, पहले पिछले ओवर में काशिफ ने ऊपर रखा हुआ था फील्डर, बहुत आसानी के साथ बैकफुट पे आके इसको स्क्वायर की तरफ खेल दिया है।
जैन ने अपनी 19 सेंचुरी की तरफ गामजन है जैन। स्पिनर्स पे अच्छा डोमिनेट किया उन्होंने। काशिफ सिद्दीक को उन्होंने रन्स काफ़ी किए, मोर देन 50% रन्स उन्होंने काशिफ पे किए। अब फील्डर ऊपर ले लिया उमर सिद्दीक के लिए स्क्वायर लेग। फिर स्वीप करने गए थे उमर सिद्दीक, थोड़ा मिडिल लेग स्टंप पे गिरा था बॉल। ये देखें थोड़ा बाउंस हुआ है, कलाई से ऊपर गेंद लगा। बैट्समैन ने थोड़ा सा कहा कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए उमर सिद्दीक को, अभी आए हैं। थोड़ा सा काशिफ जो बॉलिंग कर रहे थे वो थोड़ा सा तेज ट्रेजेक्टरी से बॉल कर रहे थे, लेकिन जल्लाद ने अब तक हमने जो देखा थोड़ा वेरिएशन के साथ थोड़ा स्लो बॉल किया है। फिर बहुत अच्छा बॉल फ्लाइट के साथ बॉल किया था, ड्राइव करने गए यहाँ पर उमर सिद्दीक और गेंद हल्का सा जिसे कहना चाहिए टर्न हुआ और बोल्ड हो गए उमर सिद्दीक। देखिए फ्लाइट के साथ बॉल किया था और पाँव बहुत दूर था टूवर्ड्स बॉल, उनका पाँव नहीं गया, कवर नहीं कर सके अपनी लाइन को और गेंद को गैप दिया। इस तरह उमर सिद्दीक आउट होकर पवेलियन में वापस 7 रन बनाए 61 पे 2। आगे जैन आ जाए। सैफ बदर खेलने के लिए आए हैं नंबर 4 पोजीशन पर। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अभी अभी कप्तान आउट हुए। यहाँ सदर्न पंजाब के उमर सिद्दीक जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन स्ट्रोक जो है वो कप्तान के शायान शान नहीं था। पहली बार जल्लाद बॉलिंग करने के लिए आए थे और ज़्यादा गेंदें उनने खेली भी नहीं थी जल्लाद खान की। शुरू में ही उन पर हावी होने की कोशिश की और अपनी विकेट से हाथ धो बैठे और इस मरतबा कॉट बिहाइंड एक और विकेट गिर गई और इस बार जैन अब्बास विकेट कीपर को कैद दे बैठे। ये तेज़ गेंद थी और बिल्कुल बेबस नजर आए जैन अब्बास ताज वली के सामने। इस बार देखिए कंसिस्टेंट लाइन के ऊपर बॉल करते हुए थोड़ा सा ये गेंद जो है वो राइज हुआ, लेकिन जिस अंदाज में खेले थे जैन अब्बास आउट होकर पवेलियन में वापस, तो 40 रन बनाए जैन अब्बास ने 61 पे 3।
के बाद 2 विकेटें गिरी यहाँ पर सदर्न पंजाब। कप्तान उमर सिद्दीक को जिल्लात खान ने बोल्ड किया और अभी सेट हो गए थे। 40 रन पर बैटिंग कर रहे थे जैन। ताजवली ने आउट किया तो ताजवली की ये दूसरी विकेट। सलमान अली आगा आ गए हैं खेलने के लिए। ये 2 इनफॉर्म बैट्समैन इस वक्त पिच पर हैं और 2 गेंदों के वक्फे में ही ये 2 विकेटें गिर गई। सलमान अली आगा बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। इस साल सबसे ज़्यादा रन्स उन्होंने बनाए हैं कायदे आज़म ट्रॉफी में। अच्छे क्रिकेटर बनकर सामने आ रहे हैं। ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। अच्छे फील्डर हैं सलमान अली आगा। सैफ और सलमान, इनको अब इस इनिंग्स को संभाला देने की ज़रूरत है क्योंकि अचानक ये टीम जो है 61 पर 1 विकेट गिरी हुई थी। इसी स्कोर पर ही 2 विकेटें गंवा बैठी, जिसके सबब दबाव में आ गई है। बिल आखिर कोशिशें रंग लाईं और ताजवली ने अपनी पहली विकेट हासिल कर ली, लेकिन इससे पहले जिल्लात खान ने बोल्ड किया उमर सिद्दीक को। देखिए ये उछलती हुई गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। यहाँ फाइन लेग पर कोई फील्डर नहीं है। उमैद आसिफ बहुत दूर से भागते हुए आ रहे हैं, तकरीबन मिड विकेट के इलाके से, लेकिन वो गेंद को नहीं रोक सके। 4 खुशनसीबी के रन्स। सलमान अली आगा की इनिंग्स का आगाज़ हुआ। अच्छी लाइन के ऊपर बॉल किया क्योंकि नए बैट्समैन को जितना आगे करते हैं और उसका, लेकिन लकी रहे यहाँ सलमान अली आगा। फाइन लेग पे कोई फील्डर नहीं था। 4 रन हासिल हुए। 11 इनिंग में 600 रन बनाए सलमान अली आगा ने और अब 604 हो गए। एवरेज भी बहुत अच्छी है। 169 उनका सबसे अच्छा स्कोर। 588 रन सऊद शकील ने। हम्माद आजम 572 रन। कामरान गुलाम 547। बहुत अच्छा बॉल अपील हुई है अंपायर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जा रहा था बॉल। अच्छी लाइन के ऊपर ताजवली बॉलिंग करते हुए। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि विकेटों के सामने जरूर थे। नी रोल से ऊपर लगा। आई थिंक गेंद ऊपर ही जा रहा था तारिक। अब आप देखें थोड़ा सा पिच में भी बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ है। तेज़ आ रहा है बॉल। इनिशियली अगर आप देखें पहले घंटे के अंदर, पहले 1.5 घंटे के अंदर इतना अच्छा निकल नहीं रहा था बॉल। अब थोड़ा सा पेस से जा रहा है बॉल। अच्छा बॉल है, एम्पायर का इशारा, लेकिन नो बॉल का। पहला एक्स्ट्रा मैच का। 2 स्लिप, 2 गली, पॉइंट कवर्स, मिड ऑफ। नए बैट्समैन सलमान अली आगा के लिए अच्छी फॉर्म में है सलमान अली आगा। ये नो बॉल जो बिल्कुल पॉपिंग क्रीज से काफ़ी आगे। अगर आप इन फॉर्म बैट्समैन को जल्दी आउट करने में कामयाब होते तो बहुत ही सक्सेस होगी। पहले 2 घंटे के अंदर बलूचिस्तान की टीम को 3 ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। बहुत अच्छा बॉल अंदर आया था, लेकिन इसको मैनेज कर गए सलमान। 2 रन बने मिड विकेट खेलने में कामयाब हो गए थे। बड़ा अच्छा अंदर आया था बॉल, एंड में इसको बड़ा मैनेज किया, लेंथ को पिक किया। सदर्न पंजाब के बैट्समैन रन ज़रूर बनाते रहे हैं, लेकिन 3 विकेटें गंवाने के बाद इस वक्त उनकी टीम बैकफुट पे है। रॉन साइड में इस वक्त 2 ही फील्डर हैं, मिड ऑन और फाइन लेग पे। दोनों बैट्समैन जाहिर है कि लंच के लिए खेलेंगे।
एक ही ओवर बाकी बचा है, 68 पे 3। जजे आप पे रहना। जल्लाद खान अब राइट हैंड बैट्समैन तो राउंड द विकेट बॉल करते हुए स्लिप पॉइंट उन्होंने लिया है और एक स्लिप है पूरा ऑफ स्टंप को कवर, ऑफ साइड की फील्ड को कवर करते हुए बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ और एक कैचिंग पे इमरान फरद खुद ड्राइव के लिए। के साथ बॉल किया था, अच्छी बॉल की पिच पे गए सैफ बदर और अपना हमने अकाउंट भी यहां पर खोला, एक रन आसानी के साथ बनाया। सदर्न पंजाब को गुज़श्ता मैच में लेफ्ट आर्म स्पिनर थे नौमान अली नॉर्दर्न के, उनके खिलाफ मुश्किल हुई थी। स्वीप करने के लिए चले गए सलमान अली आगा, 2 रन का यहाँ पर इजाफा होना चाहिए। सलमान अली आगा ने बहुत मेहनत की है नवीद अहमद के साथ मिलकर, जो फॉर्मर लाहौर के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और इनके कोच हैं, इनके क्लब कोच नवीद अहमद अबू धाबी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ भी कोचिंग करते हैं। ये बेहतर क्रिकेटर बनकर उभर रहे हैं, हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं। पहले स्वीप शॉट खेला, इस बार कट किया, लेट कट और 4 रन्स मिल गए सलमान अली को, उनका दूसरा चौका। पीछे गिरा था बॉल, अच्छी शॉट खेली, लेट जिसे कहना चाहिए, बिल्कुल गेंद को आने दिया। उसके बाद ये देखें उन्होंने अंदर की तरफ खेला, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं, तो यहाँ पर 4 रन हासिल हुए सलमान अली आगा को। बड़ी क्रिकेट व तारीख चेंज भी हो गई है एज ए बैट्समैन। अगर हम देखें कि बहुत जल्दी भी करते हैं बैट्समैन, इनिशियली जो है इस टाइप के शॉट जो स्वीप मारना कि आपकी इतनी आई नहीं होती, लेकिन अब बैट्समैन शायद इतनी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि वो आते ही वो शॉट खेलते हैं। ये शुरू में हम जो बैट्समैन थे तो वो इतनी इनिशियली ये वाले शॉट से गुरेज करते थे, लेकिन अब बैट्समैन खेलते हैं। एक और लेट कट और एक और चौका, बड़ी जल्दी जो फील्डर थे उन्होंने हथियार डाल दिए, बड़े ज़ोरदार तरीके से खेला था। ये फेवरेट शॉट है सलमान अली आगा का, देखिए अपनी नज़रों के बिल्कुल नीचे खेला, बल्ला एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर तक लेकर गए। अच्छा शॉट था, अच्छा कट करने का तरीका था। रिप्ले पहला शॉट भी उसी तरह कवर करते हुए ऑफ स्टंप की लाइन को, और लेट खेला, उनको पता है कि फील्डर कहाँ पर है, तो ये अच्छी क्वालिटी होती है बैट्समैन की, जो गैप में वो खेलें। तो ये देखिए अगर वो जल्दी मारते तो फील्डर के पास जाता है, उन्होंने और लेट खेला, 2 बाउंड्रीज हासिल की इस ओवर के अंदर सलमान अली आगा ने। जहाँ 29 ओवर्स और इस सेशन का खेल इसके साथ ही मुकम्मल हुआ। 79 रन बनाए सदर्न पंजाब ने इस 2 घंटे के खेल में और 3 विकेटें गंवाई। सलमान अली आगा नॉट आउट बैट्समैन हैं जिनने 16 रन बनाए हैं, उनके साथ सैफ बदर हैं, उनने भी अपना अकाउंट ओपन किया है। अच्छा सेशन रहा सदर्न पंजाब के ख़िलाफ़ बलोचिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर जैसे उन्होंने इख्तिताम किया, आखिर में 2 विकेटें यके बाद दीगरे हासिल करके ये जल्लाद खान ने अपने पहले ही ओवर में उमर सिद्दीक की जो विकेट हासिल की, उसके सबब मैच का जो तवाज़ुन है वो उन्हें ज़्यादा बिगड़ने नहीं दिया। ये 2 इनफॉर्म बैट्समैन वापस आ रहे हैं।
देखिए इनिंग्स का आगाज़ जैन अब्बास ने किया था और उन्होंने शुरू में अच्छे स्ट्रोक लगाए। उमैद आसिफ की ये फुल गेंद थी। इमरान रफ़ीक ने अपना पहला चौका लगाया, ये छक्का लगाया था काशिफ भट्टी के खिलाफ और जैन अब्बास ने छक्के के बाद चौका लगाया, लेकिन फिर इमरान रफ़ीक क्या ही दे बैठे अयाज तसव्वुर को। अच्छे स्ट्रोक स्कोर के पीछे देखने को मिले। जैन अब्बास अच्छे लग रहे थे, अपनी मिस सेंचुरी के करीब आ रहे थे, लेकिन दूसरे एंड पर अपनी विकेट गंवा बैठे कप्तान। और फिर अगले ही ओवर में अगली गेंद पर एक और विकेट मिल गई जैन अब्बास की ताज वली को। स्कोर कार्ड जैन ने 40 रन बनाए और रफ़ीक 14 रन बनाने के बाद आउट हुए। उमर सिद्दीक 7 रन और नॉट आउट बैट्समैन सैफ 1 रन पे और सलमान अली आगा 16 रन पर बैटिंग कर रहे हैं 79 for 3। और ये पार्टनरशिप थी पहले विकेट की 42 रन की, दूसरे विकेट की 19 रन की और तीसरे विकेट जो आते ही आउट हो गए थे तो कोई पार्टनरशिप नहीं। और ये जो चौथी विकेट की पार्टनरशिप जारी है। एक एक खिलाड़ियों को आउट किया वली ने, जल्लाद और उमैद आसिफ ने। 29 ओवर हो चुके हैं और लंच टाइम है 79 for 3। तो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में खाने का वक्फा है और वक्फे के बाद आप दोबारा हमें ज्वाइन कीजिएगा। खूबसूरत शॉट दिलकश तरीके से खेला, स्क्वायर ऑफ द विकेट। Just a push with a straighter bat gets him a boundary. Left edge, straight to the man, first wicket. This one first and then the openers. Okay. Hello and welcome to the highlights of round 7, day 1, Southern Punjab versus Balochistan. The toss was won by Southern Punjab, and there are no doubts they wanted to bat first on this wicket with runs available for them. And the two sides making a few changes. Good to see some usual suspects back. Balochistan getting Bismillah Khan, their wicketkeeper batsman. Jalal Khan included 2 left-arm spinners for them. Umaid Asif also looking good. Imran Farad back in the side and takes over the captaincy, whereas Southern Punjab being led by Umar Siddiq, getting Amir Yamin back. Mohammad Ilyas service is available again. They've got the leg spin of Zahid. So pretty balanced both the sides and ready to have an encounter. So at lunch on day 1, Southern Punjab, who chose to bat first, haven't really taken advantage much. They were dropped twice, but they still have lost 3 wickets. The two openers, Zain and Rafiq, had a very cautious start. You can see the number of balls faced by them. And then they lost their captain, Umar Siddiq, as well. All of them trying to fish outside the off stump and one going to the spinner. Looking to form partnerships here. They took 120 balls to form a 42-run opening partnership. After that, it's just been Balochistan
and their bowlers. 79 for 3 at lunch, with a wicket apiece for Taj Wali, Umaid Asif and Jalad. Kashif yet to get there, but he's bowling well. Let's see what happens in session 2.
with the greatest respect to the bowling of Balochistan, I think the batsmen were out to poor shots and poor judgment. Yes, Balochistan has been lucky to get those 3 wickets. They were a fast bowler short, but Taj Wali has done well alongside Umaid Asif, and Jalal Khan also getting 1 wicket. It was more of poor shots rather than bowlers doing anything, especially the last 2 wickets that fell. Zain Abbas and Umar Siddiq both playing bad shots. That's Saif Badr is into runs. He's got the starts in almost every inning that he has played, but has just somehow not capitalized on it. That's the bowling card for Balochistan. Taj Wali, he's into his 11th over, 4 maidens, 24 runs and 1 wicket. Umaid Asif bowled really well for 9 overs, 16 runs and 1 wicket. Kashif Bhatti used for 8 overs without a wicket for 25 runs. Jalal Khan bowled just 2 overs, 14 runs and 1 wicket. Good delivery, but well left outside the off stump. Salman Ali Agha at the non-striker's end. Saif Badr facing. Very stylishly left. Well, if you can't play too well, at least have the right style. 2 slips, 2 gullies. There's the field. There it is, next to the wicket-keeper, Bismillah Khan. Once again outside the off stump. I think Taj Wali trying to tempt Saif Badr to have a nibble, and one of the 2 slips or the 2 gullies will gobble him up. There's also a point just backward of point, and then a cover and a mid-off on the offside. Is there no one on the onside? There is one at deep mid-on. This is round 7, first day. Double league system. It's steered away straight to point. 79 for 3. Play after lunch having commenced a couple of overs ago, and the sun has brightened up a bit. No haze now. That started off in the morning. Pleasant afternoon in Karachi. Good over to start the inning for Balochistan. A maiden for Taj Wali. Still, the score is on 79 for 3 after 30 overs. And just to take you through the other games that are happening in Karachi, Khyber Pakhtunkhwa taking on Sindh at SBP ground. Sindh, the toss was uncontested. Sindh chose to bat, and at lunch they're 87 for 1. Shajil Khan making a quick 57 runs, and Umar bin Yusuf still on 24 not out. And in the other game at UBL, it's Northern taking on Central Punjab. Northern choosing to bat first, and at lunch they're 88 for 5. Umar Amin scoring 29 runs. Hamad Azam is not out on 15. And Hassan Ali taking 2 wickets. Bilal Iqbal also taking 2 wickets. Waqas Maqsood taking 1 wicket. So something there for the fast bowlers. Both of the fast bowlers taking two wickets each at UBL. And at National Stadium, it's going to be Kashif Bhatti. Oh no, it's Jalal Khan to start off things. It's Jalal Khan. In fact, he is amongst the wickets, and those are the first runs after lunch, and that's going down towards the deep mid-on boundary. Should be cut off. No, it is not. Crosses the line, 4 runs. So Salman Ali Agha goes on to 20. Very delectable looking stroke. He made room, went on to the back foot, just wide of the fielder, and there was strength enough in it. He timed it properly, and the ball went straight to the boundary for 4, beating the fielder. Jalal Khan. And Salman Ali Agha. That's a correct forward defensive stroke.
If anyone is looking at it, that's copybook. Left foot well down to the pitch of the ball, left elbow well up in the air, eyes over the ball, and then keeping it down. Bismillah Khan back in action. Good to see him back. Bubbly character. Once again, it's a nice looking stroke, but there is a fielder this time. Prevents any runs from being scored except for one. In fact, I beg your pardon. So Salman Ali Agha goes to 21. Now this is where Salman Ali Agha has been so good. He's the in-form batsman for Southern Punjab, the top run getter of this tournament. And overhead, if you can see, 21 runs is made of 14 deliveries. He's not shy of hitting boundaries, getting runs. I think that is the right way to go about on this pitch. Oh, that's appeal. Did that came off the foot? We'll have to wait and see. Umpires now, both of the umpires coming together. Sabada looks confident. But, what can the other umpire do about it? That ball was outside the off stump. I don't think he even saw what was happening. So Ahsan Raza has just gone there. I think he must have said, how was the dessert for lunch? But he's gone upstairs. We haven't seen the soft signal from Ahsan Raza. That's the requirement, and he says not out. So if Ahsan Raza says not out, it usually is right. Salman Ali Agha. Now the third umpire is having a look at it, Rashid Riaz. That seems to be a legal or fair delivery from Kashif Bhatti. And it is tossed up, turned a bit. Did he get a touch to it? I don't think he did. But let Rashid Riaz have a closer look. He's the one to decide. Forward he comes. No, that bounced on the ground. Oh no. Quite right, Ahsan. Thank you very much. Come on, Riaz. Give him not out. I wonder what Bismillah Khan was appealing for. That bounced right in front of him. It is still appealed. He was appealing more in hope than in anything else. That's not even hope, sir. Clearly bounced in front of him. There should be a penalty of 5 runs for such appeals. But anyway, I'm sure they'll think up something. The ICC has to have some work to do. So we can't call it a near miss because it wasn't even dropped and it went from the ground right into Bismillah's gloves. Maybe he didn't, in all fairness to Bismillah Khan, maybe he didn't see that. He just saw the ball coming to him. Nicely driven towards the mid-off fielder. One taken. End of the over. It's 85 for 3. Southern Punjab. Those bubbles which you see there, they're not biosecure bubbles, by the way, if anyone is thinking about it. Those are the roofs of the stands around the National Stadium. They are new construction. This ground was prepared for the PSL event. And they had Malaysian contractors bringing those, they look like bubbles. And talking of biosecure bubbles these days, everyone thinks you have any bubble they see, they think it's a biosecure bubble. Nice looking stroke, correct stroke. That's the class of Saif Badr. Very fine batsman. Yes, I totally agree. Very fine batsman from Sialkot. Saif Badr played for Pakistan under 19 also. Very stylish looking batsman. Reminds me of Shoaib Malik. Just because of his stance and the way he plays. Everyone from Sialkot reminds everyone of Shoaib Malik. Shoaib Malik, by the way, is also from Sialkot.
He's happy to let it go. Raj Malik must look to make him play, just ball wicket more into the wicket, because this pitch still has something to offer to the seamers. You just need to be at the right line and length. The 6 teams who are participating in this tournament, how are they selected or picked? I mean, for example, in the Balochistan side, you have only 2 Balochis. Both are playing at the moment. Otherwise, the rest are not from Balochistan. That's a nice looking stroke. Smooth, silky, productive. 4 runs to Saif Badr. A very good shot through the covers, through that extra cover region. Have a look at this. Everything good about this. Soothing on eyes. Beautiful shot by Saif Badr. This is where he looks so good when he's getting those runs going. It's right at the middle of the bat. So yes, coming back to your question about how these players have been distributed, I think this is the second year that these teams have been distributed, and these PCB has decided that these are the teams that we're going to go to the specific regions, especially the southern Punjab. If you look at, there are many players who are from southern Punjab area. Central usually depends on teams from Lahore, Faisalabad, and the players who do not have those regions teams, they are sent to Balochistan or KPK. Do they have players from Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan? They won Salman Irshad from Azad Kashmir is, I believe, in second 11, the fast bowler. And I cannot recall of anyone from Gilgit-Baltistan. There's an appeal. Ooh, but that's probably, it hit him high this time. Yeah, the appeal was there. They made a lot of noise. There was no confidence in that appeal. I think he got an inside edge, and also the height. And the ball may have been just going down the leg side. Saif Badr, 6 not outs. Salman Ali Agha, 21. It's 89 for 3. Saif Badr seems to be a very correct batsman. I don't believe in what is called technique, because I don't really understand what is technique. But yes, there is a correct batsman who doesn't edge the ball here and there and just plays forward. For example, I watched Vivian Richards here making 180 plus against the West Indies, against Sri Lanka in a World Cup match, right on this ground, and about half a dozen of his sixers landed in front of us somewhere, and the cameras took evasive action. But he was sheer brute force, footwork and timing. And I asked an expert, and he says he doesn't have any technique. But that's a nice shot. That's going to be 4 runs. Just go and fetch it. Relax, relax. Even Usain Bolt would not have got to it. That ball travelling. Lovely stroke from Salman Ali Agha. It's again a very correct player. No wonder he's got 600 plus runs already in this tournament. How old is the boy? He's still very young. He's probably 24 or 25. About your age. Yeah, about 10 years younger than me. But 10 years is no difference. I feel the same age though. Fielder is now being placed at mid-wicket. Not only that, Ali, you also act the same age. He's 27, according to our statistician.
who's disappearing about in an hour's time to go and take an examination. About what, we are not told. Salman Ali Agha is a very good all-round cricketer, a very good batsman, a handy bowler and a very good fielder also, a very fit cricketer. He was picked for Lahore Qalandars also, could not get a game. And he's been in an amazing form this year, more than 600 runs already. He's from Lahore, isn't he? Yes, definitely. I've seen him before in the domestic scene. Has he been given an international exposure as yet? Deserves one. 93 for 3 at the end of over number 33. Salman Ali Agha 25, Saif Badr 6. Balochistan versus Southern Punjab. Round 7, day 1. It's going to be Taj Wali again, around the wicket this time. Well, he's trying to create that angle going to Saif Badr. He's definitely one candidate for that LBW because he shuffles across. This is a 4-day match. Now you're too young for that, but I remember when Pakistan started playing Test cricket, their first assignment was in India in 1952, and all 5 Test matches were 4-day duration. Why? Because they thought this new nation, they can't really play for more than 4 days. And then they went to England in 1954, where it was also 4-day Test matches. Then after the performance in India and then in England, it was realized that no, they have come of full age. In the West Indies, they used to have 6-day Test matches. And for Hanif, that was even about a week less than what he required. Were you commentating back then also? Were you commentating back then also? No, I wasn't. I was preparing for it. That's a nice shot. Very nice shot. He found the gap between cover and extra cover down to the boundary. 4 runs. He aimed it well. And that is Saif Badr for you. There it is, right on the spot. The ball raced away to the extra cover boundary for 4. Well, in 1957 I was watching all these things, and 10 years later I started commentating. Yeah, you've come a long way. You've seen all these highs and lows of Pakistan cricket. If I may ask, what has, according to you, been the best era for Pakistan cricket in terms of talent and cricketers coming? It's yet to come. Still yet to come. What about 90s? We spoke about so much about those 90s team we had. I suppose so. I mean, there were ups and downs. And the records will show Pakistan overall has done all right, but all the teams have undergone ups and downs. That's a no ball. Yeah, those 90s, there was that era. I think it was the best that has been for Pakistan cricket. Pakistan becoming the world champion. And all those big stars, big performers, you name it, they were all quality there at that time. Yes, you're right. It matters a lot on the composition of the team. Like you said, Pakistan in the 90s. If you've heard of John Buchanan, who was the manager of the coach of the Australian team, I think he was there for 5 years. The captain was Steve Waugh, and the team which Steve Waugh had was all conquering. And Buchanan, I don't think even worked for a day. And someone asked him that, what do you do? He says, I don't know. Because every player knew his responsibility, every player had the ability, and of course
there was united team. There were no camps, nothing of that sort. That was the situation with the Pakistanis at one time. They had tremendous talent. Majid, Sadiq, Zahir Abbas, Imran, Asif Iqbal, Mushtaq Mohammad, Wasim Bari. And then you take the bowlers who came later on, Wasim Akram, Waqar Yunus, Aqib Javed, and then they all keep churning them out. End of the 34th over, 99 for 3. Yeah, they're talking about the 90s. I mean, the cricketers who could not make it to international cricket, I mean, they were so talented, so big performers at domestic level. We talk about, especially in fast bowling, we talk about somebody like Fazle Akbar, some Kabir Khan. They could not make it to international cricket for long, but wonderful bowlers they were. What an era that was for Pakistan cricket. And then again, yes, as you mentioned, Australia took over, and now I believe it's turn for England and India for the same sort of performers in their sides, the way they're dominating the world. Kashif Bhatti. That's Jalad Khan, not Kashif Bhatti. Jalad Khan. I beg your pardon. They both have so many similarities. Yeah, I know. I'm not. I was wondering why Balochistan have picked 2 spinners, left-arm spinners, and only 2 pace bowlers. Maybe they were hoping that the pitch will turn third or fourth day. That's 100 off for Southern Punjab at the loss of 3 wickets. So yes, maybe that could be one reason. The third day might not come for them. But yes, you need to have your third seamer. Let's cut away. Straight to the man though. One will be taken, yes. Fumble. You see, not only that there should be an extra seamer or an extra all-rounder, genuine all-rounder, somebody who can bowl and bat equally well, because there might be an injury. I remember when Pakistan went to Sri Lanka, Ramiz Raja was the captain, he was the stand-in captain. Pakistan's opening bowling attack was Mohammad Zahid. And there was Nazir, Shahid Nazir. And Zahid was lightning quick. Both had back problems. And they were as stiff as if you have put them in starch. Steered away. Is that the end of the over? Not yet. It is. 35 overs bowled. It is 102 for 3. So the bowling from Pakistan was opened by 2 brothers-in-law. Can you guess who? Not in this tour, that tour. I don't think you were even born. It was Salim Malik and Azam. Yes. Didn't I say brothers-in-law? You just said brothers. That's what I was thinking. No, maybe you missed out the law. Yeah, those times, beautiful times for Pakistan cricket. Shahid Nazir, an excellent new ball bowler, and Mohammad Zahid now been the bowling coach at National High Performance Centre. I think he's the great inclusion in Pakistan cricket. He was residing in England, coming back here. Top man. I covered his debut in Rawalpindi, and he was quick. I haven't seen a quicker bowler. And Brian Lara, I think, who faced him, declared that he hasn't seen anyone quicker than Mohammad Zahid. Shoaib Akhtar, well, he clocked 100 miles an hour, and then there have been other pace bowlers. But then there were bowlers at the time when there was no speed guns and all that. Well, what about Hall and Griffith, Gilchrist, Holding, Garner? Yes, I wonder how tough batting would be in those days, with
Now it's all those equipment to helmets. The protection is there. Protection nowadays we never used to see at those times, and the bowlers were real quick. Especially they used fast. The bouncers were there. Batting must have been very tough. It was. In fact, Nari contractor got a cracked skull in the West Indies against Charlie Griffith. Charlie Griffith was not only fast but brutish. That's a nice looking stroke. He has hooked him away down towards deep backward square leg. And the batsmen settle for one, taking the score to 104 for 3. Saif Badr goes to 14. Salman Ali Agha remains on 27. And there were South African bowlers. There was Heine, there was Pollock, not Sean, but Sean's uncle, Peter Pollock, was Sean's father, Peter Pollock. I thought, yes, Graham Pollock was the batsman. And then there was Mike Proctor, as I said. And there were Australian fast bowlers, of course. Starting off with Lindwall, Miller, and then going down to Lilly, Thompson. So we don't know how quick they were, but then definitely once the speed guns came, then now we are measuring. But how good these speed guns are, I'm not quite sure. Yeah, that's the benefit of commentating with you. You get all those, you refresh your memories from back those years. It's lovely to hear from you. It's great learning. Well, I hope you become in charge of all these commentary situations. I'm always welcome. I have nothing else to do. No, it's always great to have you in the commentary box. Thank you. Can you write it down after our stint and let me have it? I will WhatsApp you. Which you're learning so hard. Trying so hard with those smartphones. I have not only commentated with you, I have also commentated with your illustrious brother. And I have also commentated with various brothers like Hanif, Mushtaq and Sadiq. I'm not sure whether I commentated with my friend Wasim Raja, but he was a good friend of mine. But I have with Ramiz, of course, a fairly long time. And then, of course, Majid Khan, I think I did a stint or two sometime. And Bazid, of course. I had a lot of time for Bazid. Lovely lad. Very soft spoken, very well mannered. 104. It's been a while we have spoken about the live cricket match going on. Easy. This is a good partnership growing for Southern Punjab and driven through the covers. This is where Agha Salman is so good with finding those gaps between cover area. And the type of form he is in, look at that, it looks so great. Through the covers, finding the gap to perfection. Very good boundary for him. And this partnership now, slowly bringing up. It's a very important partnership for the Southern also. Not that they're scoring runs, they're occupying the crease also. Agha Salman quickly moving on to 31 of just 27 deliveries. First of all, the selection of the Balochistan side, as we mentioned, is a bit questionable. Then I think the captain Imran Farhat has done nothing out of the box. He's just followed the SOPs. We're into SOPs these days. Yeah, he got 3 wickets before lunch. Probably that's the one he's relaxed a bit now. But now we can see Bismillah Khan just moving around the fielders alongside Imran Farhat. They've got an extra fielder in extra cover position because probably they know that Agha Salman plays on that side a lot. He likes it there towards extra cover area.
Down the track this time. I don't think so there was a catch, but nicely driven towards long off for one. You're talking about the selection. Very surprised to see just two seamers for Balochistan side, although they do have Akbar Rahman who can bowl leg spin, but they still opted for two left-arm spinners in place of Mohammad Tala and Khurram Shahzad, the two seamers who have been left out on the side. It's hard work for them. Down the track again, not afraid to use his feet, Agha Salman. Well, you don't blame him, the type of form he is in. He's middling each and every delivery. Not surprised at all. He's cut it away. This is the type of form he is in, I was saying. He can cut, drive, pull, everything is going on his way. That's 50 partnership between these two. Very well played. Salman Agha moving to 36 of 30. Quickly onto the back foot. Find the gap to perfection. 4 runs to him. And he's done well, but while hitting that boundary, he has crossed over the Nelson's figure. He's gone from 110 to 114. Otherwise, you can be stuck at 111, which is Nelson's. 37 overs bowled. That's the current partnership. 53 runs of 61 deliveries. Salman Ali Agha 36 of 31. That's quick timing. And Saif Badr 15. Good support to Salman Ali Agha. That's the contribution of the two, the current partnership. And for the sake of the Punjab side, the southern Punjab, it is hoped that this will blossom, this will flourish, and they'll go get to a very, very decent score and give Balochistan a run for their money. That was the end of the over. Sam bowling change, left arm round. Ajao. Center. थोड़ा सा आगे हल्का सा. ये ठीक है. ताज वली की जगह पर काशिफ भट्टी आ गए हैं। इन्हें पहला स्पेल पवेलियन एंड से किया था, 8 ओवर्स में 25 रन दिए और अब फार एंड से आएंगे सैफ बदर के खिलाफ। अच्छी पार्टनरशिप अब तक पनप रही है। 61 गेंदों में 53 रन की सलमान और सैफ पिच पर मौजूद हैं। खासी मुश्किल हालात थे जब सलमान ने सैफ को ज्वाइन किया। 61 रन पर 3 विकेटें गिरी। दोनों स्पिनर्स में एक फ़र्क ये लगा है लेंथ का और रफ्तार का। काशिफ भट्टी ने ज़्यादा तेज़ बॉलिंग की है। सीनियर स्पिन बॉलर हैं महमूद हामिद इस टीम में। काशिफ भट्टी, इनका रोल क्या होना चाहिए पहले दिन जब टीम 2 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स के साथ खेल रही है इस बॉलिंग लाइनअप में? रोल तो एज ए सीनियर बॉलर का है ये कि आप टीम के लिए आप विकेटें लेके दें, और यही सिचुएशन होती है एक सीनियर बॉलर की कि आप पे डिपेंड कर रही होती है टीम कि आप ऐसे मौके पे एकदम आप आउट करके दें, एक आप 5 आउट करके दें ताकि टीम को फ़ायदा हो। तो ये एक सीनियर बॉलर, लेकिन इट डिपेंड्स भी कर रहा होता है कि पिच के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। पहला दिन है, सच कोई इतना कोई जिसे कहना चाहिए कोई टर्न नहीं हो रहा या मुश्किल नहीं हो रही स्पिनर के ऊपर बैट्समैन को। और अगर हम ये देखें कि पिच जो है वो ग्रीन पैचेस हैं, फास्ट बॉलर इस पे ज़्यादा बेहतर बॉलिंग कर सकें रादर के स्पिनर। हाँ, डेफिनेटली ये तीसरे दिन जाके कुछ स्पिनर को मदद ज़रूर देगी। तो ओवर का अख्ताम 115 पे 3।
This touch. Thanks. Right arm over. उमैद आसिफ आ रहे हैं। एक विकेट इन्होंने हासिल की थी आज, दरअसल पहली विकेट इमरान रफ़ीक की। सलमान, सैफ बदर, इन दोनों से खासी उम्मीदें हैं। इसके बाद इनका कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है, 2 ऑलराउंडर्स हैं, मोहम्मद इमरान और आमिर यामीन, फिर 3 टेल एंडर्स बाकी रह जाएंगे। इस बार ऑफ द टॉस खेला मिड विकेट की जानिब, मुकाबला है तैमूर और गेंद के दरमियान, लेकिन ये रेस गेंद ने जीत ली। सैफ बदर बहुत अच्छा खेलते हैं ऑन की तरफ, और बहुत ही अच्छी शॉट खेली, मिडिल लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल था और उसके कलाइयों का इस्तेमाल किया, ऑन की तरफ खेला मिड विकेट पे फील्डर की पहुंच से दूर। तो इसी तरह जो है सलमान, वो भी ऑन अच्छी खेल रहे हैं। स्पिनर्स को मैं देख रहा हूँ कि चढ़ के बिल्कुल ऑन बॉल के ऊपर जाके वहाँ से ऑन खेलते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को। तो रन्स बनाने इनको आते हैं कि किस तरह इनको रन्स बनाने हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जहाँ पर, क्योंकि ऑन साइड पे अगर अमूमन आप फील्डर देखें बहुत कम होते हैं, इस वक्त भी अगर आप देखें तो 3 फील्डर ऑन साइड पर हैं, बाकी ऑफ साइड पर हैं, तो गैप्स आपको बहुत नज़र आते हैं। इधर जो अच्छे खेलने वाले होते हैं उनको रन्स बहुत मिलते हैं। तो मैंने देखा दोनों बैट्समैन जहाँ पर उनको इस एरिया के अंदर बॉल मिलता है तो वहाँ पर वो रन्स करने ज़रूर जाते हैं, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो। ये एक बड़ी इनिंग्स इनको खुद भी चाहिए है, टीम के साथ साथ सैफ बदर को। मिस सेंचुरी में बनाई हैं, 30 और 40 के पेटे में भी आउट हुए हैं इस सीज़न में, क्योंकि इनको बराबर मौके मिल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के। सेंचुरी बनाना होगी। ये देखिए यहीं पर ज़्यादातर गेंदें लेफ्ट हैंडर को ऑफ स्टंप के बाहर करते रहे, छोड़ने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। इब्तिदा में ज़्यादा दूर दूर बॉलिंग कर रहे थे। देखिए ख़ास तौर पर पहले स्पेल में तो सैफ बदर के साथ जो सलमान हैं ये बहुत रन्स बना रहे हैं। 636 रन इन्होंने बना लिए हैं इस सीज़न में, ये टॉप स्कोरर हैं। लेकिन आज अभी तक हमने किसी बॉलर को इनके खिलाफ बाउंसर का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। ये बहुत दिलचस्प मुकाबला हो सकता है अगर उमैद आसिफ जो हैं, ये सलमान अली आगा और सैफ बदर दोनों को यहाँ पर बाउंसर करने की कोशिश करें ताकि इनकी टेक्निक टेस्ट हो शॉर्ट गेंदों के सामने भी। सैफ बदर थिंक अंडर 19 से आए थे, वहाँ परफॉर्म करके जिस तरह ये बहुत तेज़ी के साथ ऊपर आए थे। तो सीज़न के अंदर आप जैसे बता रहे हैं कि 30-40 रन 50 रन कर दें, एक प्लेयर को लोग जानने लगे हैं, तो 100 करना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर एक 200 किए हुए होते, 7वां मैच है सीज़न का, तो एक और बड़ा एक इम्पैक्ट इनका आ जाता। तो जब 30-40 कर सकते हैं उसको बड़ी इनिंगों में तब्दील करना चाहिए इनको, तो इनका और अच्छा नाम बनेगा। अच्छी टेक्निक है इनकी। तो ओवर के अख्ताम 119 पे 3। साथ ही है।
119, 3 खिलाड़ी आउट सदर्न पंजाब के टॉस जीतने के बाद पहले खेलते हुए। स्वीप शॉट के लिए एक फील्डर को खड़ा किया गया है स्क्वायर लेग से ज़रा पीछे बाउंड्री लाइन पर। ये अटेम्प्ट किया स्वीप शॉट, अंपायर को कायल नहीं कर सके काशिफ भट्टी जोरदार अपील से भी। ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुआ हुआ था बॉल और तीनों स्टंप्स दिख रहे थे। जिस जगह पे बॉल गिरा था, क्योंकि ऑफ स्टंप का पूरा पैक हुआ हुआ है, तो उन्होंने चांस लिया। अच्छा, मतलब एक सेफ जिसे कहना चाहिए चांस लिया था सलमान ने। बैकफुट पे आके उसको बहुत ही अच्छा पंच किया है कवर ऑफ पॉइंट के दरमियान से, और दूसरा रन, तीसरा रन लेने में भी कामयाब हो जाएंगे यहाँ पर। सलमान आगा बहुत अच्छी शॉट के लिए, थोड़ा सा शॉर्ट बॉल था, उसको बड़ा अच्छा पिक किया, बैकफुट पे आके जिस पंच किया कवर ऑफ पॉइंट के दरमियान। ये देखें, खूबसूरत टाइमिंग थी। लगता है कि बड़ी अच्छी फॉर्म जिस तरह पिछले मैचों में भी परफॉर्म किया हुआ है, आज आते ही जिस तरह उन्होंने शॉट्स खेले थे। सैफ बदर फेस कर रहे हैं। यार एक साथ दोनों को बैटिंग करना पसंद भी है। यहाँ पर इन्होंने मैच जितवाया था बलोचिस्तान के खिलाफ सदर्न पंजाब को। दोनों उस मैच में बहुत अच्छा खेले थे, ख़ास तौर पर सलमान अली आगा। इन्हें विकेटें मिली दोनों इनिंग्स में, अपनी टीम के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। ये थोड़ी देर तक हवा में रही, अपने बल्ले का फेस क्लोज किया था जल्दी सैफ बदर ने। 122 पर 3। महमूद हामिद कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे कि 40-50 रन्स काफ़ी नहीं होते, और अगर आप आउट हो रहे हैं इनिंग्स का आगाज़ करने के बाद और सेट होने के बाद, ये अच्छी आदत नहीं है। ये देखिए सलमान और सैफ की अब तक जो पार्टनरशिप हुई है, दोनों बैट्समैन जो हैं विकेट के सामने अच्छे स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुए हैं। स्पिनर को भी, फास्ट बॉलर को भी लेट कट, ये खूबी है सलमान अली आगा की। अच्छी बैटिंग का मुजाहरा इस पेयर की जानिब से। यहाँ कभी कभार अपना पाँव प्लांट कर देते हैं जल्दी स्टंप्स की लाइन में, तो जिक्र हो रहा था। ये देखिए 40 रन पर सलमान अली आगा हैं, 21 रन बनाए हैं सैफ बदर ने। कि सैफ बदर जो हैं ये बड़ी इनिंग्स, या आजकल के जो बैट्समैन हैं सेट होने के बाद आउट हो जाते हैं, कई 50 रन बनाने के बाद भी आउट हो रहे हैं। तो जो पुराने पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, जब एक बार वो सेट हो जाया करते थे, फिर बहुत मुश्किल होती थी उनको आउट करना। यहाँ पर एक इनिंग्स जो है आफ्ताब बलोच की, वो कोई नहीं भूल सकता। ये आप देखिए बलोचिस्तान के खिलाफ ही मैच था सिंध का, और 428 रन इनफरादी तौर पर उन्होंने बनाए थे। आफ्ताब बलोच टेस्ट क्रिकेटर भी थे। 1973-74 का ये मैच है जिसमें जावेद मियांदाद
जो है उन्होंने विकेटें भी ली थी और सेंचुरी भी बनाई थी। पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी जावेद मियांदाद ने इसी मैच में बनाई थी आफ्ताब बलोच के साथ खेलते हुए। जफर फिर ऑन की तरफ खेला है, बहुत आराम के साथ 2 रन बनाने में कामयाब हुए सलमान अली आगा। हैबिट की भी बात होती है कि आप सेटिस्फेक्शन आपको नहीं होती जब तक आप बड़े रन्स ना करें। जब ये 428 रन्स की जो इनिंग्स है नेशनल स्टेडियम पर जो आफ्ताब बलोच ने खेली थी, ये किसी भी बैट्समैन की यहाँ NSK पे सबसे बड़ी इनिंग्स है। आज तक कोई इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका। और बाद में जब ये इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड के दौरे पर पाकिस्तान टीम के साथ, तो इनका वहाँ होटल में जो कमरा नंबर था हर बार वो भी 428 ही हुआ करता था आफ्ताब बलोच का। महमूद हामिद इनको बहुत करीब से जानते हैं, PIA में इनके साथी रहे, साथी क्रिकेटर। जी आफ्ताब भाई बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर थे, बहुत परफॉर्मेंस की उन्होंने। और ये फर्स्ट क्लास की हिस्ट्री के अंदर ये 4था हाईएस्ट स्कोर है तारिक साहब। एक अचीवमेंट होती है इंसान की, और देखें अचीवमेंट जब आप करते हैं तो आपको बार बार याद किया जाता है। तो ये बहुत पुराना मेरे ख्याल से 1973 का मैच है और आज भी हम उसको इस मैच को याद कर रहे हैं। तो यही इम्पोर्टेंट होता है। आपका नाम इस दफ़ा फिर उसी लेंथ के ऊपर बॉल था, खूबसूरत टाइमिंग, खूबसूरत शॉट। सलमान आगा जो ऑन पे बहुत ही अच्छा खेलते हैं, 2 रन हासिल किए। उमैद आसिफ का ओवर का इख्तिताम 128 पर 3। यहाँ तो ये बहुत ही यादगार मुकाबला था, ख़ास तौर पर रिकॉर्ड्स के एतबार से। सिंध की टीम ने 951 रन बनाए नेशनल स्टेडियम पर। यह भी एक रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा, बलोचिस्तान के खिलाफ 951 रन का। और ये फसीहुद्दीन जिन्होंने 77 रन की इनिंग्स खेली थी, ये बलोचिस्तान के बड़े मशहूर कप्तान गुजरे हैं, विकेट कीपर बैट्समैन। और इनके दौर में बलोचिस्तान ने कई कामयाबियाँ भी हासिल की। लेकिन ये मैच जो था, जाहिर है कि बलोचिस्तान के खिलाड़ियों के लिए कोई इतनी अच्छी उसकी यादें नहीं हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स बहुत बने थे। जावेद मियांदाद ने अपनी पहली फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई थी मैच में। थोड़ा सा नीचे रह गया बॉल, बैकफुट पे गए थे सैफ बदर, लेकिन अच्छा एंड में मैनेज किया। एंड वक्त तक बॉल के ऊपर नजर। बदर किस रन पर नॉट आउट हैं। अपने का इस्तेमाल किया, उनकी तरफ खेला, बहुत तेजी के साथ रन बनाया। अच्छा साथ दिया उनका सलमान आगा ने, क्लोज रन था, विकेट कीपर भी भागे थे। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है मेंटली, कि आपकी सेटिस्फेक्शन कितने रनों पे होती है। कुछ लोग 30 रन को भी समझते हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना हंगरी होना रन्स का, तो 30 नहीं, 30 के बाद 50, 50 नहीं, 50 के बाद 70, 70, 100, मतलब ये 100 पे भी कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते, वो पर बड़ी बड़ी इनिंगें खेलते हैं। तो फिर आपकी एक हैबिट बनती है। जो अच्छे कोचेज़ होते हैं या अच्छे जो मेंटर होते हैं, वो आपको यही बताते हैं कि लंबी इनिंग खेलना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। इस दफ़ा गेंद को 3rd मैन पे निकालने में कामयाब हुए थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट होती है। आप स्ट्रॉन्ग कहाँ कितने हैं, तो ये सारी चीज़ें फिर आपको हैबिट। अब इसी एरा के कुछ क्रिकेटर्स हैं जो कि अपनी कन्वर्जन रेट 50 से 100, अगर आप उनको देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्वर्जन अपनी ज़्यादा रखी है। तो उससे भी आइडिया हो जाता है आपको कि प्लेयर जो है वो 100 के लिए कितना कीन है। लाइक अगर आप पिछले मैच में भी अगर हम देखते हैं 23 सेंचुरियाँ की हैं, फॉरगेट नेम, एक 130 पर 3। मैं उस्मान सलाउद्दीन की बात कर रहा था, उसका अच्छा फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है, 23 सेंचुरियाँ उनकी। इसी तरह अगर आप
सिंध से देखें तो खुर्रम मंजूर, उनकी अच्छी सेंचुरीज़ हैं, फवाद आलम की बड़ी अच्छी सेंचुरीज़ हैं। तो ये जो आप उनकी अगर आप सेंचुरीज़ को देखें तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये जो है कन्वर्जन 50s कम होंगी, उनकी सेंचुरी ज़्यादा, तो वो सेंचुरीज़ की तरफ ज़्यादा जाना। इस वक्त एक स्लिप है, एक गली है, ऑफ साइड में 3 फील्डर उसके अलावा हैं 1 रन बचाने के लिए। ये अच्छा बाउंसर, इसका हम जिक्र कर रहे थे कि बाउंसर करना चाहिए सलमान अली आगा के खिलाफ, खासतौर पर अगर ये हर बार इनिंग से शुरू में इनके खिलाफ अपनाया जाए तो कामयाबी के इम्कानात होते हैं। जैसे अगर हम पुराने क्रिकेटर्स को देखें, जो हमारे स्टार लेजेंड्स क्रिकेटर ज़हीर भाई, उनकी 100 से ज़्यादा सेंचुरियाँ, 107 सेंचुरियाँ, जावेद भाई की 80+ सेंचुरी जावेद भाई की हैं, 80 सेंचुरी। इन प्लेयर्स की आप रिकॉर्ड्स देखें कि वो किस तरह रन्स बनाते थे। वो सेंचुरी मुझे अच्छी तरह याद है। इसी ग्राउंड में मैच मैं खेल रहा था और मैं 80+ करके मैं आउट हुआ एक इनिंग में। अगले मैच में फिर मैंने मैं आउट हुआ तो ज़हीर भाई ने मुझे कहा तुम्हें सेंचुरीज करने का शौक़ नहीं है, 80-50 ये मुझे पसंद नहीं है। मतलब उनकी सोच जो थी वो 100 की थी, तो 100 करने वाले को ही वो पसंद भी करते थे। तो ये आप किसी भी ऐसे प्लेयर के साथ अगर आप गुजारते हैं टाइम तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ता है, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली भी। जी हाँ, क्योंकि जो कराची स्कूल ऑफ बैटिंग था उसमें 100 रन बनाने के बाद भी आपको फ्रेश गार्ड लेना पड़ता था। स्विंगिंग यॉर्कर आखिरी मरहले पर अपना बल्ला नीचे लाए, से डिग आउट किया सलमान अली आगा ने। देखिए स्क्वायर लेग पर फील्डर एक बाउंसर के लिए रखा हुआ था, शुरू में ही उनको बैकफुट पर किया, उसके बाद यॉर्कर का इस्तेमाल किया। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। अच्छा ओवर करते हुए उमैद आसिफ, एक फील्डर रखा हुआ है डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, बैट्समैन के दिमाग में कि बाउंसर करेंगे, और उसी दौरान एक यॉर्कर किया, इफेक्टिव यॉर्कर था और आखिर में अच्छा उसको मैनेज किया सलमान ने। कैसे खेला, कवर में रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया सैफ बदर ने। उमैद आसिफ ने जो भी इस ओवर में बाउंसर किया था, अच्छा बाउंसर किया था। अब आप थोड़ा सा देखें पेस चेंज होता जा रहा है, पिच का भी थोड़ा सा हार्ड हो रहा है पिच। इसमें बैट के ऊपर भी बड़ा अच्छा लगता है बॉल आके, और बॉलर को भी मज़ा आता है, कैरी करता है बॉल। ये गेंद जो है गिरने के बाद सीधी रही। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा उमैद आसिफ की जानिब से, स्टंप्स को अटैक कर रहे हैं। और देखा 2 सेट बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग करना आसान नहीं होता इस तरह से, लेकिन मुश्किल में लेकर आए हैं सलमान अली आगा को, उन्हें दिफा पर मजबूर किया है। फरहत की मुश्किल यह है कि उनके पास 2 ही पेस बॉलर हैं। पहले दिन पेसर के लिए मौके हैं। ये देखिए गेंद इनसाइड एज होकर पैड पे आई, उछली थी लेकिन फील्डर से दूर गिरी। बेहतर ओवर था उमैद आसिफ का, 130 पर 3।